All right. So the plan for today is that we are going to cover this paper, November 2021, paper 3, variant 2. This is what we are starting today. Okay. Again, you can have a look at some instructions here. ये आपकी standard instructions होती हैं. हमने paper 1 में भी देखी थी. These are 2 points that you have to be careful about. You have to show all necessary working skip नहीं करनी है, और आपके आंसर जो हैं वो at least 3 significant figures के होने चाहिए. ठीक है? In general, unless there is another level of accuracy that's specified in the question itself. Okay. All right. Now let's begin right away. This is paper 3. It's considered considered the most difficult paper in A-level maths. It's going to take some time as well. So let's start right away. Okay. All right. So this is the first question that we have. So it involves logarithms. We have to find the value of x for which 3 into 2 raised to power 1 minus x equals 7 raised to power x. And we have to give an answer in this form. ln की form में answer देना है, यानी कि decimals में convert नहीं करना हमें. Where a and b are integers. Okay. Now, how do you find the value of x? का मतलब है आपने this equation को solve करना, right? This equation को solve करना. Now, a lot of times जब आपके पास किसी number की power में x आ रहा हो, हम अक्सर सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाते थे. बट यहाँ पे देखें, एक आपके पास 2 की पावर में x आ रहा होगा और एक आपके पास 7 की पावर में x आ रहा होगा. Substitution is not going to be helpful here, right? Because you'll have to use 2 different substitution, which is not going to help. आप उसको solve नहीं कर सकेंगे. So substitution is not going to work here. ठीक है? उसका फायदा नहीं. अगर आप एक को u assume कर लो, दूसरे को v assume कर लो, you will not be able to solve that further. तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस पर डायरेक्टली लॉग्स अप्लाई कर सकते हैं. डायरेक्टली लॉग अप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स के ऊपर. इसका फायदा क्या होएगा, ये दोनों x की पावर्स नीचे आ जाएंगी, and then we would be able to solve it further. Okay, so let's do it that way. Let's apply log on both sides. Log of 3 into 2 raised to power 1 minus x, and on the other side we've got log, which is ln of 7 raised to power x. हम ज़्यादातर ln ही use कर रहे होते हैं whenever we apply logs, because that's more common in A levels. Okay, now we can use the power rule on the right side. Right side पे तो हमारे पास हो जाएगा x into ln 7. Now what about the left side? Can we just take this power here as the base? We can't do that, so that's good for us. And we will have to break it first. ठीक है? क्योंकि power जो है वो पूरे की नहीं है. पावर पूरे की नहीं है. अगर पूरे की पावर होती, मतलब 3 की भी पावर होती 1 minus x, तब हम पावर लॉ यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे. अभी नहीं कर सकते. We will have to break it first. Okay, so we'll say this is ln 3 plus ln 2 raised to power 1 minus x. तो हमने multiplication law यहाँ पे अप्लाई कर दिया. And now we can use the power law here, and we can say this is ln 3 plus 1 minus x into ln 2. And that equals x into ln 7. So हमने x जो है वो power से eliminate कर दिया, उसको नीचे लेकर आ गया. Okay. वालेकुम अस्सलाम मुस्तफा. So this is what we have. And now we can solve this. हमने x को subject बनाना है. Take x terms to one side and constants to the other. Let's simplify this first. We get plus ln 2 minus ln 2 times x. On the other side, we got x ln 7. ln वाली term, x वाली terms को इस right पे ले जाते हैं. We have x into ln 7 plus x ln 2. और left side पे हमारे पास सारे ln 3 plus ln 2. We can take x common on the right side because हमें x की value find करनी है. x को subject बनाना है, तो x को common ले लेते हैं. We have ln 7 plus ln 2. On the left side, we've got ln 3 plus ln 2. And therefore, x equals ln 3 plus ln 2 divided by ln 7 plus ln 2. Now, if you were asked to just solve this equation and give an exact answer, it would have been fine to just leave it at this point. आप इसको इस तरह से छोड़ सकते थे अगर उसने सिर्फ इसको solve करने का कहा होता. लेकिन उसने आपको एक स्पेसिफिक एक फॉर्म मांगी है. उसने न्यूमरेटर में भी सिर्फ एक लॉग होना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी सिर्फ एक लॉग होना चाहिए. हम इसको कंबाइन करेंगे किस तरह से, राइट? सो इट्स 2 इंटीजर्स. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंबाइन करना पड़ेगा.
we've got addition outside logarithms. तो multiplication law apply करके क्या कर सकते हैं, इसको combine कर सकते हैं. Addition outside logarithm, तो ये क्या बन जाएगा, multiplication inside the logarithm. So हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ln of 3 into 2, or denominator maybe we can say this is ln of 7 into 2, and therefore x equals ln 6 divided by ln 14. ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, and this is the form that we were required, that we needed, ln a over ln b. Fazen, we can't do that. ln को cancel नहीं कर सकते. This is not 6 over 14. I hope you just meant कि ये आपका result आएगा, right? So you can't cancel ln like this, right? Don't do that, right? ln is not a number that you can cancel. It's a function जो 6 के ऊपर apply हो रहा है, right? So it will stay there. We can't cancel log like that. Okay, yeah, I get it. Okay. So this is what we get. So this can't be 6 over 14. So cancel नहीं करता. All right. Okay. So this is the value of x that we get at the end. That's the first question. Let's move on. Walaikum assalam, Mujtaba, Farzan. I hope you're all doing well. Let's do the second part. Second question now. This is a modulus inequality. Modulus inequalities के लिए हमने एक standard method किया हुआ है that works in every kind of modulus inequality. Whatever you get, हम क्या करेंगे? हम इसको as an equation treat कर लेंगे. ठीक है? So we start by treating this as an equation, and we will find the cutoff points after that, right? So इस modulus inequality को आप as an equation treat कर लें पहले, and find the cutoff points. So modulus of 3x minus a equals 2 into modulus of x plus 2a. ठीक है? अभी के लिए inequality को ignore करें और इसको as an equation treat कर लें. ठीक है? And then what you're going to do is you're going to put plus minus on any one of the two sides. दोनों sides में से किसी भी एक side के ऊपर plus minus apply कर दें. ठीक है? किसी भी एक side पे plus minus लगा दें. So I can input that on the right side, let's say, और modulus खत्म कर दें. 3x minus a equals plus minus 2 into x plus 2a. And now I can break it down into two parts. I can say this is, let me change the color. Yeah, that's more visible. 3x minus a equals 2 into x plus 2a. एक ही equation आ गया हमारे पास. एक हमारे पास आ गया 3x minus a equals minus 2 into x plus 2a. Okay. And now we can find the values of x from each of them. 3x minus a equals 2x plus 4a. And that gives us x equals 5a. And the second equation gives us 3x minus a equals minus 2x minus 4a. Take x to the left side, we get 5x equals minus 3a, and x equals minus 3 over 5 times a. ये हमारे पास दो x की values आ गई. These are not our final results. These are just the critical values that we're going to look at. जब हम number line बनाएंगे, number line पे ये दो values के around regions देखेंगे. ठीक है? So that's the first thing we do. We treat this as an equation. We find two cutoff points. अब हम क्या करेंगे? Number line बना लेंगे. So we have this number line. On this number line, we write down the smaller number here. Minus 3 over 5 is the smaller number. ये यहाँ पे लिख लिया. Minus 3 over 5 times a के terms में remember. And the other number is 5a. ये दो numbers हैं आपके पास. These are the critical values. Now there are three regions that you get from this. एक region आपके पास left side वाला है, एक region दरम्यान वाला है, एक region right side वाला है. आपने तीनों regions पे टेस्ट कर लेना है कौन सा region satisfy करता है, कौन सा region satisfy नहीं करता. ये कौन सा केस है? This is the inequality. इसमें दोनों साइड पे मॉडुलस लगा होता है. हमें पता है कि या तो इस जब दोनों साइड से मॉडुलस होता है आपके पास दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं. या तो मिडिल वाला रीजन सही होता है और साइड्स वाले इनकरेक्ट होते हैं, या फिर साइड्स वाले करेक्ट होते हैं और मिडिल वाला इनकरेक्ट होता है. यही दो पॉसिबिलिटीज होती हैं. तो इस केस में अगर आप दरमियान वाला सिर्फ चेक कर लो, दैट्स जनरली इनफ. बट अगर आपके पास सिर्फ एक साइड पे मॉडुलस होता है तो फिर हमें सारे रीजन चेक करने पड़ते हैं. सो यू कैन मेक इट अ हैबिट कि सारे रीजन चेक कर लें जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड सो दैट यू डोंट मेक अ मिस्टेक ड्यूरिंग द एग्जाम. हम क्या करेंगे? तीनों रीजन के अंदर एक एक नंबर ले लेंगे. -3 over 5 से छोटा नंबर कोई लेफ्ट साइड पे आप क्या ले सकते हो? -3 over 5 is actually -0.6. तो उसके लेफ्ट साइड पे -1 ले लें, राइट? बट नॉट जस्ट -1, -1 times a, राइट? सो लेफ्ट साइड पे एक नंबर ले लिया, लेट्स से -1a और -a कह लें आप. ठीक है? टेक अ नंबर इन द मिडल. -3 और 5 और 5a के दरमियान में नंबर ले लें. इट विल टेक 0,
राइट. सो 0a कह सकते हैं, वो 0 ही हो जाएगा. और 5a से बड़ा नंबर, ओके, यू कैन टेक 10a. यू हैव 10a हियर. ये तीन आपने नंबर्स ले लिया. इन तीनों को अब आप क्या करेंगे, अपनी इनइक्वालिटी के अंदर टेस्ट करेंगे. You've got the inequality there, that's 3x minus a, and we write that here again. 3x minus a का मॉडुलस. अब हम inequality को यूज कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि कौन सा रीजन सेटिस्फाई करता है. 2 into x plus 2a. आपने क्या करना है, ये जो तीनों वैल्यूज आपने लिखी हैं, इन तीनों को 1 by 1 इनपुट करके देख लेना है, इनमें से कौन सी सेटिस्फाई करती है, कौन सी सेटिस्फाई नहीं करती. ठीक है, तीन रीजन्स के अंदर ये तीन नंबर्स दे रहे हैं. Okay, let's try the one that we have on the left side. Let's try that. We have 3x minus, 3 into minus a का modulus. That is greater than 2 into minus a plus 2a का modulus. What do we get from this? Minus 3a minus a modulus. That's greater than 2 into modulus of a, and we get 4a greater than 2a. That's correct. 4a is in fact greater than 2a. So ये region हमारा satisfy हो गया, ये correct है. The left region is correct. ठीक है. अब अगर आप वो reasoning use कर लो, क्योंकि दोनों साइड से मॉडुलस है, ये कौन सा केस बनता है आपको डायरेक्टली पता चल रहा है. लेफ्ट वाला ट्रू है, राइट वाला ट्रू है, और ये वाला नहीं होना चाहिए. ठीक है. अगर दोनों से मॉडुलस हो, आप डायरेक्टली इसमें कर सकते हो इस तरह से. बट you can just verify all of them just to be sure. 0 input करके देख लेते हैं एक दफा. 3 into 0. आप देखेंगे दरम्यान में रीजन जो है वो इनकरेक्ट होना चाहिए. Let's try that. 3 into 0 minus a का मॉडुलस, that's greater than 2 into modulus of 0 plus 2a. What do we get from that? We get minus a का मॉडुलस, which is essentially a, greater than 2 times 2a, that is 4a, and that's incorrect. दरम्यान वाला रीजन जो है वो करेक्ट नहीं है, लेफ्ट वाला करेक्ट था. लेट्स ट्राई द वन ऑन द राइट साइड. 10a चेक कर लें. 3 into 10 times a minus a का मॉडुलस, that's greater than 2 into modulus of 10a plus 2a. Let's simplify this. We get 29a on the right, on the left side, and we are getting that is greater than 2 into modulus of 12a, and that is 29a greater than 24a. That's also correct. So the region on the right side is also correct. So we have these two regions जो satisfy हो रहे हैं, -3/5 के left वाला और 5a के right वाला. So what's our final result then? We say x is either less than -3/5a or x is greater than 5a. This is going to be your final result here. Okay, ये हमारा final solution है guys. Okay, I hope that makes sense. Let's move on. ठीक है, ये हमारा modulus inequality वाला question होगा. Let's do the next one. So we've got complex numbers already, बिल्कुल शुरू में, but it looks like a relatively easier question, छोटा question like that. That's only 6 marks. Okay, let's have a look at this. Yes, Fazan, that's correct. अगर आपके पास इन ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर इक्वालिटी का साइन लगा होता है इस तरह से, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो जो आपके फाइनल सॉल्यूशंस होंगे उसमें भी आप इक्वालिटी का साइन लगा दोगे. अगर वो लगा होता, अगर नहीं लगा होगा तो फाइनल सॉल्यूशन में भी आप अपने इक्वालिटी का साइन नहीं लगाओगे. ऑलराइट, सो यस, दैट्स करेक्ट. Okay. Let's do question number 3 now. Now we are given that the complex number u equals a plus iota b and w equals c plus iota d, where a, b, c and d are real. We have to prove that u plus w का जो conjugate है, ये notation आपको पता होनी चाहिए. उसने यहाँ पे specify नहीं किया कुछ भी, उसने कहीं कुछ नहीं बताया. ये जो steric होता है, इसका मतलब होता है conjugate, right? So if you have z star, that means conjugate of z. All right. Okay. Now we are given the complex numbers u and w. हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं. अब ये प्रूव करना है आपने, इसको एज एन इक्वालिटी नहीं ट्रीट करना शुरू से.
ठीक है, u प्लस w होल स्टेरिक ये एवेल्युएट कर लेता है। अच्छा, a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d का कॉन्जुगेट, अंदर हमारे पास क्या आ गया, वी आर गेटिंग a प्लस c, ये आपका रियल पार्ट हो गया, एंड द इमेजिनरी पार्ट इज b प्लस d आयोटा। ये आपके पास अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ये आ गया, ठीक है, उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब ये स्टार का क्या मतलब है, इसका आपने कॉन्जुगेट करना है, ठीक है, इसका आपने कॉन्जुगेट करना है। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होएगा, प्लस की जगह पे आपके पास माइनस आ जाएगा, सो दिस टर्न्स आउट टू बी, जो ऊपर हमने स्टार्ट किया जिससे, दिस इज a प्लस सी माइनस b प्लस डी आयोटा, ये आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया लेफ्ट साइड वाला। इसका रियल पार्ट इज a प्लस सी एंड द इमेजिनरी पार्ट is minus b plus d. Now let's evaluate what you've got on the right side. Right side पे क्या है आपके पास, u conjugate plus w conjugate, इनको पहले conjugate करना है, उसके बाद आपने add करना है। So how do you do that? u का conjugate क्या होगा, it's going to be a minus iota b, that's u conjugate. w का conjugate, that is c minus iota d. Remember conjugate क्या होता है, बस आप जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके इमेजिनरी पार्ट को का साइन चेंज कर देते हो। तो अभी ओरिजिनली पॉजिटिव था, उसको आपने नेगेटिव कर दिया, ये दोनों के कॉन्जुगेट्स आपने लिख दिए यहाँ पे। नाउ सिंप्लीफाई दिस, व्हाट डू यू गेट, यू गेट a माइनस आयोटा b प्लस c माइनस आयोटा d, रियल पार्ट में ऐड हो गया, a प्लस c आ गया, इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो गया, अगर आप इसमें कॉमन ले लो, माइनस कॉमन आ जाता है, एंड यू हैव b प्लस d आयोटा, सो दे आर बोथ इक्विवेलेंट, ये आपने प्रूव करना था, these two are the same, they are equal, okay, that's the first part, that's only 2 marks, so that was pretty straightforward. Khadija, you can square the sides to remove modulus as well, जो हमने ऊपर पिछले पार्ट में किया था, प्लस माइनस यूज किया था, आप स्क्वायर करके भी कर सकते हो, but I generally like to do it using plus minus, because इससे फायदा क्या होता है, आपकी जो इक्वेशंस बनती हैं वो सिंपल होती हैं, लीनियर इक्वेशन होती है, राइट। अगर आप स्क्वायर करते हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, एंड दैट्स स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन दिस, राइट। सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर प्लस माइनस। आप हमेशा प्लस माइनस से कर सकते हो, बट यस स्क्वायर करके भी किया जा सकता है, वो आप कर सकते हो, ओके, दैट्स आल्सो करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, ओके। लेट्स कम बैक हियर, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी। Solve the equation z plus 2 plus iota का conjugate plus 2 plus iota z that equals 0. ये आपने equation solve करनी है, giving your answer in the form x plus iota y, where x and y are real. अच्छा, equation solve करने का क्या मतलब है, आपने z की value find करनी है, right? That's what we want. We want the value of z, ठीक है। अब z आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा, दैट्स सपोज्ड टू बी ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा y। तो इस तरह के क्वेश्चन पे जहाँ पे कोई इक्वेशन सॉल्व करनी हो और वो आप z एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, आप स्टार्ट ही ऐसे कर सकते हो, आप कह सकते हो कि z की जगह पे आप इनपुट कर दो x प्लस आयोटा y, और फिर आप x और y की वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करो, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी गोइंग टू स्टार्ट दिस। z की जगह हम क्या डाल देंगे, हम x प्लस आयोटा y डाल देंगे, ठीक है। सो x प्लस आयोटा y z की जगह आ गया, एंड देन वी हैव प्लस 2 प्लस आयोटा और उसका कॉन्जुगेट, प्लस 2 प्लस आयोटा, एंड अगेन z इज x प्लस आयोटा y, एंड दिस होल थिंग इक्वल्स 0। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, ये स्टार का मतलब क्या है, कॉन्जुगेट करना है आपने, जो इसके अंदर रखा होगा, तो पहले आप रियल पार्ट को अलग कर लो और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लो। सो व्हाट्स द रियल पार्ट, रियल पार्ट इज x प्लस 2, जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ, दैट्स द रियल पार्ट। व्हाट्स द इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज y एंड दिस इज 1 आयोटा, सो दैट्स y प्लस 1 आयोटा, दैट्स द इमेजिनरी पार्ट। इसको कॉन्जुगेट करना है, ठीक है। ये तो सिंपल एक प्रोडक्ट है, यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिस तरह आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो, इट्स गोइंग टू बी 2x प्लस 2y आयोटा प्लस
x iota plus iota square y. Okay, अब ये अंदर वाले का कॉन्जुगेट क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दोगे, you get x plus 2 minus y plus 1 iota. Now outside you've got 2x plus 2y iota plus x iota. Iota square जो है वो -1 होता है, so this becomes minus y. Now we simplify this further, we get x, on the other side we got 0, so we can just write that here. X plus 2 minus y iota minus iota plus 2x plus 2y iota plus x iota minus y equals 0. ये आपके पास इक्वेशन आ गई. Now what we're going to do is we are going to bring together the like terms. Real parts को इकट्ठे कर लें और imaginary parts को इकट्ठे कर लें. ठीक है? Real parts कहाँ पे कौन से हैं जिसपे आपके पास iota नहीं आ रहा? Imaginary parts are the ones जहाँ पे iota आ रहा है आपके पास. Real parts को इकट्ठा लिख लेते हैं. अच्छा पहले तो देख लें. We have an x here, we've got 2 here, we've got 2x here, and we have minus y here. ये सारे real parts हैं और ये imaginary parts हैं जो मैंने green में shade किया. ठीक है? Yellow parts को इकट्ठा कर लें. We've got x and 2x, that becomes 3x, and then we have minus y plus 2. ये real part हो गया आपका. The rest are imaginary. एक 2y आ रहा है आपके पास, ये minus y आ रहा है, that becomes y. And then we have x, y plus x, and we have this minus iota, वो 1 बन जाएगा, -1 बन जाएगा. So इन सब के साथ iota आ रहा है. ठीक है? All I've done is, इनमें ये जो बाकी terms है green वाली, उनमें से हमने iota common ले लिया, and this is what I end up with. ये मेरे पास equation आ गई. Now remember complex numbers में क्या होता है? If you've got an equation like this, what you do is you say जो real part है लेफ्ट साइड के ऊपर वो राइट साइड के रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, और जो लेफ्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट है वो राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए. अब राइट साइड पे तो हमारे पास है ही सिर्फ 0, तो बेसिकली राइट साइड पे रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है. तो हमारे पास 2 इक्वेशंस बन जाएंगे इससे. एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, दैट्स गोइंग टू बी 3x minus y plus 2 equals 0. एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, क्योंकि राइट साइड पे तो 0 है ना. राइट साइड पे 0 कैसे आएगा? अगर आपका रियल पार्ट भी 0 होगा और आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट भी 0 होगा, दोनों ही आपके पास 0 होंगे. So we get y plus x minus 1 equals 0. We get 2 equations, and now what you can do is we can solve these 2 equations. ठीक है? इनको simultaneously solve कर लें, आपके पास x और y की values आ जाएंगी. ठीक है? Now how do we solve them? You can use any method that you prefer. What I'm going to do is I'm going to say this is y equals 3x plus 2. इसको जाके मैं वहाँ पे input कर देता हूँ. So that's 3x plus 2 plus x minus 1 equals 0. That's 4x plus 1. So that's 4x equals minus 1. X equals minus 1 over 4 आ गया मेरे पास. I put this back in the first equation. I get the corresponding value for y. Y equals 3 into minus 1 over 4 plus 2. What does that turn out to be? Minus 3 over 4 plus 2. Anyone? 8 minus 3, that should be 5. So we have 5 over 4. That's the value of y that we have. ठीक है? हमारे पास x और y आ गए. अब हम क्या कहेंगे? जो z है, z was supposed to be x plus y iota. हम z को लिख देंगे. अब z की वैल्यू क्या होगी eventually? x, which is minus 1 over 4, plus y. Y is 5 over 4 iota. This is what we were looking for. ये आपने solve कर लिया equation. Okay? Any questions on this? This was a bit tricky because conjugate वाली notation इस तरह से बहुत frequently आप नहीं देखते past papers के अंदर, but I hope that makes sense. Okay? Any problems with this? Any questions? Shall we move on? So that was question number 4. Okay. Let's move on. Let's move on to the next one. This is partial fractions. ये हमने इसकी partial fractions निकालनी है. That's question number 4. How do we start?
इसकी फॉर्म क्या होगी? Anyone? Can I have some ideas in the chat box? Yes, that's very good. This is improper. So that's the first thing you figure out. ये fraction proper या improper, इसमें बहुत common error होता है कि आप वो recognize नहीं करो कि ये improper है. So this is improper. इसकी form क्या होगी? एक तो numerator, denominator में आप देखें linear factors हैं, तो generally इसकी form क्या होती है? अगर proper fraction होती है, it would have been a over 2x minus 1 plus b over x minus 3. अगर ये proper fraction होती तो. लेकिन ये प्रॉपर नहीं है, तो हम क्या करते हैं? एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, राइट? सो रादर देन सेइंग a and b here, we could say we have a plus b over this plus c over this, so we add a constant there. ठीक है, तो ये आपके पास जो पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे इसकी, वो इस फॉर्म के अंदर होंगी. why? because this is improper. तो एक कांस्टेंट आपने ऐड कर देना होता है. हमने ये देखा हुआ है कि a की वैल्यू निकालना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है. यू डोंट हैव टू डू लॉन्ग डिवीजन फॉर दिस, वो करने की जरूरत नहीं है. आपने सिर्फ क्या करना है, लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या आ रहा है? 4x² minus 13x plus 13 divided by 2x minus 1 and 2x minus 3. All you have to do is, जो Sharyar, no, that's not correct. 2x and x. राइट, आपने क्या करना है? पहली डिनोमिनेटर को भी आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देना है. ठीक है, डिनोमिनेटर की फर्स्ट टर्म चाहिए हमें. न्यूमरेटर की फर्स्ट टर्म क्या है? 4x². डिनोमिनेटर की फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है? इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, डिनोमिनेटर की फर्स्ट टर्म दैट्स 2x into x, that is 2x². ओके, तो हम 2x² से डिवाइड कर देंगे. a की वैल्यू आपकी ये होती है. फर्स्ट टर्म्स सिंप्लीफाइड फॉर्म में डिवाइड कर दें, ये जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाती है. ठीक है, लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं ये. फज़ेन वी कुड डू दैट, बट वी डोंट हैव टू. आप डायरेक्टली इस तरह कर सकते हो. 1 कैसे आएगा? 1 तो नहीं आता. 2x into x, इट शुड बी 2, राइट? a की वैल्यू हमारे पास 2 आती है. लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हैं, but that's not going to take more time. इसका ये तरीका होता है, फर्स्ट टर्म्स ले लें in simplified form. So you take 4x² here, denominator में 2x into x, simplify करके आपके पास ये आ जाएगा. 2x² in the denominator, you just divide them, ये आपके पास constant की वैल्यू आ जाती है. Okay, so now you've got something in this form. आपके पास ये फॉर्म आ गया. 4x² minus 13x plus 13 divided by 2x minus 1 into x minus 3. On the right side, you already have the value of a now. That's 2. So आप 2 लिख दोगे. b over 2x minus 1 plus c over x minus 3. Yes, Nawal, you've got to be careful. सबसे पहला काम अपने क्या करना होता है? You always have to figure out whether the fraction is proper or improper. ठीक है, partial fraction में सबसे पहली चीज देखनी है, डायरेक्ट नहीं कर देना. Yes, Khadija, that's correct. ये जो constant वाला है, ये जो constant add करने वाला method है, this works for all 3 types. जब भी improper होगा, आपने एक constant add कर देना है, और वो constant की value हमेशा कैसे आएगी? Let me actually show that here. In a slightly more detailed form. Denominator को आप expand कर लोगे basically. 2x² minus x minus 6x, that's minus 7x plus 3. आपने numerator और denominator को expanded form में लिख देना है, and then you're just going to divide the first terms. ठीक है, ये basically long division की इसकी logic तो वही होती है, लेकिन इसको हम डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं, बिकॉज वो फर्स्ट क्वोशिएंट वाली टर्म यही आनी होती है. हम डायरेक्टली सिर्फ फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर देंगे, हमें कांस्टेंट मिल जाएगा. ठीक है, सिंप्लीफाई करके बस डिवाइड कर देना. ठीक है, सो दैट्स वेयर 2x² is coming from. Okay, so now we've got this form. All right, now we've got this form. What do we do after this? We get rid of the fraction. LCM ले लेते हैं, या फिर आप सिंपली ये भी कर सकते हो, जो लेफ्ट साइड पे ये डिनोमिनेटर है उसको आप जाके राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर सकते हो. ठीक है, यू कैन थिंक ऑफ इट दैट वे. तो क्या होगा? लेफ्ट साइड पे यू गॉट 4x² minus 13x plus 13. When this denominator goes to the other side and gets multiplied with each of those terms, what do we get? We have 2 into 2x minus 1
into x minus 3 plus b into 2x minus 1 to cancel ho jayega. What are we left with? We're left with x minus 3 here, and then c into 2x minus 1 because x minus 3 yahan pe denominator se cancel ho jayega. So this is what we have on the right side. अब हमें b और c की values find करनी है. Now there are multiple ways of doing this. आप इसको multiply करके coefficient वो comparing coefficient method से कर सकते हो if you want, if you're more comfortable with that. But it's much quicker to just choose some values of x that will make these brackets 0. तो एक value of x हम क्या input कर सकते हैं? x minus 3 को अगर हमने 0 करना हो तो क्या input करेंगे? x की value 3 input कर देंगे. So that's what we start. x equals 3 input कर दिया because this is an identity. तो आप कोई भी x की वैल्यू इनपुट कर दें, this should satisfy. एक x की वैल्यू आपने पुट कर दी 3. What happens when you input x equals 3? You get 4 into 3 squared minus 13 into 2 plus 13 on the left side. On the right side, since this bracket is going to become 0, ये पूरी term 0 हो जाएगी. This bracket is going to become 0, ये पूरी term भी 0 हो गई. हमारे पास क्या बच गया? 2 into 3 minus 1. And now we simplify this. Left side पे हमारे पास क्या आ गया? 4 into 9 minus 26 plus 13. I'm getting 23 on the left side. 23 equals 5c. Is that correct? Right side पे हमारे पास c की value क्या आ रही है? 5c. It's a bit odd. Let's try that again. 4 into 9 is there's something wrong somewhere. Oh yeah, x की value 3 input करनी थी. I input 2 there by mistake. यहाँ पे it should have been 3. अब देखें, अब मुझे कैसे पता चला कि कुछ गलत किया मैंने? Generally जो आपके coefficients आते हैं, जो आपके पास ये constants की values आती हैं, they are not they're not as complicated as this 23/5. Normally इस तरह की नहीं आती. कभी-कभी आ भी सकती हैं, but mostly जो है वो integers आते हैं, कुछ nicer से बेहतर fractions आती हैं. Yes, Khadija, that was supposed to be 3 there, so I made a mistake. So I'm going to correct that. उसकी वजह से मेरा आंसर यहाँ पर सही नहीं आ रहा था. So if I have 23 there, I end up getting 23 minus 13. Left side पे मेरे पास आ जाएगा 10 in this case, right? So I have 5c equals 10, and the value of c turns out to be 2. So I have the value of c now. I already had the value of a. A की value मेरे पास पहले आ गई थी. That was 2. Now I need the value of b. अब हम कोई और ब्रैकेट देखते हैं, किसी और ब्रैकेट को 0 कर सकते हैं हम. 2x minus 1 को 0 कैसे करेंगे? x की वैल्यू 1/2 इनपुट करेंगे. कैसे पता चला हमें? 2x minus 1 equals 0 कर दिया. x equals 1/2. x equals 1/2 इनपुट कर देते हैं. अब इसके अंदर उससे हमारे पास आ जाएगा, उससे हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, right? So now we input x equals 1/2 and see what we get from that. 4 into 1/2 whole squared minus 13 into 1/2 plus 13. On the right side, this whole thing is going to become 0. Why? Because 2x minus 1 0 हो जाएगा. ये वाली bracket 0 होगी, पूरा 0 हो जाएगा. So we got 0 here. यहाँ पे हम x की value input करते हैं. We get 1/2 minus 3, and this last bracket is also going to become 0. So ये भी 0 हो गया आपके पास. This is what we have. ठीक है, left side पे simplify कर लेते हैं. So can somebody do this with me, just to make sure that we're doing the working correctly? 1 minus 13 divided by 2 plus 13. I'm getting 15/2 on the left side. And on the right side, we have minus 5/2 b. Okay, and the value of b that I'm getting from this is minus 3. That's the value of b. ठीक है, या बस तीनों values आ गई, a, b और c की. Now generally they accept it just until this point कि आपने a, b और c की values निकाल ली और ऊपर आपने correct form लिखी हुई है. But it's better to write that form now. आपके पास a, b और c की values आ गई हैं. अब आप लिख सकते हो, कि आपकी जो partial fractions हैं वो क्या हैं. अब a was 2, so that's 2 plus b is minus 3, so that's minus 3/2x minus 1 plus c was 2, so that's 2/2
x minus 3. These are your partial fractions. It's a good practice to write this at the end then. Okay. Yes, Farzan, you're right. I corrected that. Yes, it was supposed to be 10. Okay. ये हमारी partial fractions are. ठीक है. Let's move on. Okay, so I was expecting a binomial part after that. Yeah, so इसमें सिर्फ partial fractions थी, binomial नहीं था. Okay, let's move on. Question number 5. Vanya, I'm not sure what you mean by that. If you mean if you have specific questions on any of these, any of this working that we're doing, you can ask about that at the end, or you can write in the chat box. I'll see if it's appropriate to answer right away. अगर आपको ज़्यादा के problem आ रहे कहीं पे, you can stay back at the end, and maybe you can spend a few minutes on this if that's what you mean. Okay, let's look at question number 5. Yes, Shahryar, I'll do that. Inshallah, I'll do that. Just make sure that you remind me. मैं ये share कर दूंगा आपके साथ, ठीक है? ये सारे जो solved papers हैं. Okay. On a sketch of an Eigen diagram, shape the region whose points represent complex numbers z satisfying the inequalities this and this. Okay. अब देखिए, जब भी आपके पास ये फॉर्म आती है, सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है? आपने ये करना होता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. Now, what's the standard form? The standard form is z minus something, right? Z minus something. ये फॉर्म आपके पास आनी चाहिए. ठीक है, उसका मतलब होता है z का डिस्टेंस इस नंबर से. So that's what you do for the first inequality. First inequality को इस फॉर्म के अंदर लिखें पहले. This becomes z minus आपने कॉमन ले लेना है, and becomes 3 plus 2 iota. That is less than or equal to 1. First inequality आपके पास basically ये है. Now, how do you describe this in words? आपने इसको words में सोचना है कि अच्छा इसका क्या मतलब है. अच्छा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है distance of z from 3 plus 2 iota. ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ z from this number 3 plus 2 iota, that should be less than or equal to 1. That's what this inequality means. Z का distance 3 plus 2 iota कॉम्प्लेक्स नंबर से 1 या उससे लेस होना चाहिए. Okay? Yes, so that's 3 plus 2 iota. ये हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी आ गई. नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द सेकंड इनइक्वालिटी? सेकंड इनइक्वालिटी में लिखा हुआ है इमेजिनरी एंड देन z एंड देन दैट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. आई जस्ट रियलाइज इट्स एक्चुअली द सेकंड क्वेश्चन इन कॉम्प्लेक्स नंबर. एक क्वेश्चन ऊपर आया था. कितने मार्क्स का था वो? दैट वाज that was 6 marks and then 4 and 3 7 marks. That's 13 marks total. That's a lot. अच्छा, दूसरा आपके पास क्या चीज आ रही है? IMZ से क्या मतलब है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. इसका मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z that should be greater than or equal to 2. ठीक है, आपने पहले इसको वर्ड्स में सोच लेना है इसका मतलब क्या है जो वो इनइक्वालिटीज लिखी हुई हैं, and then it's going to be easier to draw that. Okay, now let me draw an Eigen diagram. Okay, so I have the real axis here. I've got the imaginary axis here. Now you have to sketch, so it doesn't have to be very accurate, लेकिन roughly आपकी positioning सही होनी चाहिए. अच्छा, एक आपको एक point चाहिए 3 plus 2 iota. ये point mark कर लेते हैं. Let's have some values here first. This is 0. Then let's say this is 2, 4, 3, 1. Then -2, -4, -1, -3. Then अच्छा, जब भी आप ये बनाएंगे आपने स्क्वायर ग्रिड बनानी है. ठीक है, आर्गन डायग्राम्स के अंदर हमेशा स्क्वायर ग्रिड बनानी है, स्पेशली जब सर्कल इन्वॉल्व हो. स्क्वायर ग्रिड का मतलब है
कि दोनों एक्सिस के ऊपर सेम स्केल होना चाहिए. जितना डिस्टेंस राइट साइड पे आप यूज कर रहे हो 1 यूनिट के लिए, उतना ही यूनिट, जितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली यूज कर रहे हो 1 यूनिट के लिए, उतना डिस्टेंस वर्टिकली यूज करना है 1 यूनिट के लिए. Whenever you have a diagram that involves some sort of loci, जहाँ पे locus involved होता है, आपने स्क्वायर ग्रिड लेनी होती है, अदरवाइज आपकी डायग्राम सही नहीं बनेगी. दोनों एक्सिस के ऊपर सेम स्केल लेना. ठीक है. So this is what roughly it is. It doesn't have to be very accurate, Vanya. It's a sketch after all. Roughly बस आपको accurate होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, let's mark that point. 3 plus 2 iota. Where's that point? That point is here. 3 plus 2 iota. Now, distance of z from this point should be less than or equal to 1. एक point से distance आपका 1 यूनिट या उससे कम होना चाहिए. Khizr, it's better to use a compass if you have it. उसका फायदा ये होगा आपके लिए, अगर इसकी बेसिस पर आगे कुछ पार्ट आपने सॉल्व करने, आपके लिए सोचना आसान हो जाएगा. अदरवाइज अगर आप रफ सर्कल बनाओगे ना, आपको समझ नहीं आएगी डायग्राम की अपनी बहुत ज्यादा. सो इट्स बेटर दैट यू ट्राई टू मेक इट रीजनेबली एक्यूरेट, ताकि आपको उसके बाद समझ आ सके. फॉर एग्जांपल सेकंड पार्ट में उसने पूछा है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z. अगर आपकी फिगर बहुत ही खराब है, आपको समझ नहीं आ रही होगी आपने क्या करना. ठीक है. सो यू शुड ट्राई के सर्कल, मतलब इट शुड बी रीजनेबली वेल स्केच्ड. ओके. अच्छा, distance of z from 3 plus 2 iota, it should be less than or equal to 1. 1 unit का circle बना देंगे हम. ठीक है. I'm going to draw it by hand because मेरा circle tool यहाँ पे इसके ऊपर नहीं चलेगा unfortunately. I'm just going to try and make it reasonably well. My drawing is not that well, it's not that good. I'll have to just try. Okay, let's assume it's a circle. Okay, so we can make that assumption. Okay, so we have a circle of 1 unit. ठीक है. 1 unit का circle बना लिया हमने 1 radius का. About this, अब distance of z from 3 plus 2 iota 1 या उससे कम होना चाहिए. इसका मतलब क्या है? You can only be inside the circle. Circle के अंदर हो सकता है z point, इसके बाहर नहीं हो सकता, because 3 plus 2 iota distance 1 या उससे कम होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, एक तो सर्कल के अंदर होंगे, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया. अब दूसरी चीज क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. इमेजिनरी पार्ट कहां पर है? आपके वर्टिकल एक्सिस के ऊपर. वो 2 या उससे ज्यादा होना चाहिए. तो आप क्या करोगे? आप 2 के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दोगे. इस लाइन की आपको ऊपर होना चाहिए. इस लाइन के ऊपर है आप और सर्कल के अंदर है. What region does that give you? That's this semicircle. So it's this semicircle. This is the region that satisfies both of those inequalities. Okay. Okay, it was a 4-mark question. So it might take some time when you're sketching, but it's reasonably straightforward. Okay. All right, let's move on. Let's move on to the next one. ये हमारे पास shaded region आ गया. Now we have to find the greatest value of argument of z for points in the shaded region, giving our answer in degrees. Argument क्या होता है? Argument क्या होता है? It's the angle that your complex number has from the origin. Origin के ऊपर अगर हम ये horizontal line से देखें, इससे आपका angle क्या बन रहा है? ठीक है. Now z can be anywhere in this shaded region. आपने देखना है argument of z की greatest value कहां पर होगी. Argument of z क्योंकि कहीं भी हो सकता है yellow region के अंदर, greatest argument किस point पर होगा. Now let's think about this. Origin से आप एक line बनाएं. Okay, let's make it smaller.
Okay. Let me enlarge it. That works. अच्छा, वन नोट का थोड़ा सा मसला है PDF के ऊपर ना, it doesn't let you work very well. What I'm going to do is I'm just going to take it to the side and then it will be better. Okay. Argument of z जो है हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, ओरिजिन से लाइन को ड्रॉ करें, शेडेड रीजन में कहां से कहां तक जा सकती है, इसको कहां से कट कर सकती है। इट कैन बी हियर, यहाँ पे एंगल छोटा बन रहा है, देखें एंगल बड़ा कैसे होता जाएगा, एज यू कीप गोइंग अप एंड अप, ऊपर जाते जाओगे ऊपर जाते जाओगे ऊपर जाते जाओगे, अभी भी आप येलो रीजन के अंदर हो और आर्गुमेंट आपका बड़ा होता जा रहा है, एंगल ज्यादा होता जा रहा है। एंगल कौन सा देख रहे हैं हम, एंगल हम ये वाला देख रहे हैं, ये वाला एंगल देख रहे हैं, दिस एंगल शुड बी लार्जेस्ट। ओके, तो इफ यू कीप मूविंग दिस लाइन लाइक दिस, शेडेड रीजन में देखें ज्यादा होती जा रही है होती जा रही है होती जा रही है, मैक्सिमम कहां पे जा सकते हैं, सच दैट वी आर स्टिल टचिंग द शेडेड रीजन। बेसिकली ये सर्कल के साथ यहाँ पे टेंजेंट बन जाएगा, राइट। यस खजर, दैट्स वेरी गुड, ये टेंजेंट बन जाएगा यहाँ पे इस तरह से। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू गिव यू द मैक्सिमम आर्गुमेंट, ये आपका मैक्सिमम आर्गुमेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। सो आर्गुमेंट को थीटा कह लें, या कुछ मैक्सिमम आर्गुमेंट है जब वो बिल्कुल टेंजेंट बन रहा है उस शेडेड पॉइंट के। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये एंगल फाइंड करना, ये ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करना। नाउ हाउ डू यू फाइंड दिस एंगल, इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री, कुछ सर्कल की प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे, हमें लेंस पता है, हमें लेंस पता है कि सर्कल का रेडियस 1 है, दैट्स वन थिंग दैट वी नो। what we can do is we can make a triangle like this. Now again, if your drawing is better, अगर आप उस सर्कल आपने प्रॉपर बनाया होगा, आपके लिए थोड़ा सोचना आसान होगा यहाँ पे, but let me just draw that here. इस टेंजेंट से अगर मैं लाइन बनाता हूँ एक सर्कल के सेंटर पे जा रही है जो, like this, radius of the circle is 1 and this is the tangent, tangent जो है वो perpendicular होता है आपके रेडियस के साथ, टेंजेंट रेडियस आर परपेंडिकुलर। तो मेरे पास ये एक ट्राइंगल आ सकती है इस तरह से, अगर मैं ओरिजिन को इससे ज्वाइन कर दूं इस लाइन के साथ इस तरह से, ये मेरे पास एक ट्राइंगल आ गई। नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन फाइंड बोथ ऑफ दीज एंगल्स। एक तो मैं ये ऊपर वाला पार्ट फाइंड कर सकता हूँ, लेट मी जस्ट इरेज दैट, नो नो, ओके दैट्स नॉट वर्किंग। अच्छा, एक तो मैं ये ऊपर वाला पार्ट फाइंड कर लूंगा, लेट्स कॉल दिस θ1, और एक ही मैं नीचे वाला पार्ट फाइंड कर लूंगा, इन दोनों को ऐड कर लूंगा। नाउ हाउ डू आई फाइंड बोथ ऑफ दीज पार्ट्स। जो ऊपर वाली राइट एंगल ट्राइंगल है उसके लिए लेट मी मेक अनदर ट्राइंगल हियर एज वेल बिफोर आई डू दैट। लेट्स नीचे वाला पहले फाइंड कर लेते हैं। नीचे वाली ट्राइंगल में हमारे पास θ2 एंगल आ रहा है, इसमें देखिए परपेंडिकुलर क्या है, ये लेंथ 2 है, दिस होल लेंथ इज 2, हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी है 3 है, so this length is 3 and the perpendicular length is 2। तो θ2 की वैल्यू कैसे आ जाएगी, θ2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी tan θ2 equals perpendicular over the base, that's 2/3, we find the value of θ2 from there। ठीक है, ये आप देख लें क्या आता है, डिग्रीज में उसने कहा है, आंसर देना है आपने। what do we get, tan inverse of 2/3, I think I have to do it myself, 2/3 नहीं 30 तो नहीं आ सकता, 30 नहीं आ सकता, tan inverse of 2 divided by 3, that is 33.69। okay yeah, so θ2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 32.69। ठीक है, ये एक एंगल आ गया। अब θ1 फाइंड करना है, θ1 कैसे आएगा, I know that this length is 1, do I have any other length in this upper triangle, ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर मेरे पास कोई और कौन सी लेंथ हो सकती है, I can find this length, ये वाली लेंथ, using Pythagoras in the lower triangle, या मॉडुलस ऑफ z एक ही बात है, या सो मॉडुलस ऑफ z भी फाइंड कर लें, एक ही बात है। so वो क्या होएगा, let me
call this something, this point something. ये तो O है, ऊपर वाले points में कुछ नाम दे देता हूँ. Let's say this is A, this is B, this point is C. OB length निकाल सकते हैं हम. OB length कैसे आएगी? We can do that here. OB का square, that's hypotenuse of this lower triangle. OB square is equal to 3 square plus 2 square. OB की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, that will be square root of 13. ठीक है, ये मेरे पास hypotenuse आ गया. अब ऊपर वाले triangle के अंदर I've got the perpendicular according to this angle theta and the hypotenuse, that is square root of 13. So what I can do is perpendicular hypotenuse में कौन सी ratio होती है? Sine, I can say sine of theta 1 equals perpendicular, which is 1, over the hypotenuse, which is square root of 13, and that's going to give you something. Theta 1 की value आपके पास यहाँ से आ जाएगी. You can see what that is, 1 divided by square root of 13, and then sine inverse of that, I'm getting 16.10. I think that should be correct. 16.10 degrees. ठीक है, तो अब मेरे पास total argument क्या आ गया? इन दोनों को add कर दें. Greatest value of the argument, that's 32.69 plus 16.10, and that's going to give me some value. 32.69, and you add कर दें. What do I get? 48.8 degrees. That's what I'm getting. Is that okay? Sure. 69 into 180 divided by 5. So I'm just checking, and the answer is slightly off. I'll just check my working again. 2/3 tan inverse of 2/3. That's 33.69. Sorry, मैंने number गलत लिख दिया पहले. This should have been 33.69. Yes, Khadija, thank you for that. This should have been 33.69. Okay, so we have to be careful about careless errors all the time. बहुत सारे marks इस वजह से कट रहे होते हैं. It's very important to check your working at the end, ताकि इस तरह के mistakes आप eliminate कर सकें. So this is 49, and this should have been 33.69. Yeah, so 49.8 आपके पास आता है. Eventually, that's the argument that we were looking for. Okay. Yes, so that's 33.69. Yes, I've corrected that. Thank you for that. Hashim, you should always make all diagrams using a pencil. You should always make all diagrams using a pencil. क्योंकि अगर आप पेन से करोगे, आपके पास ये स्पेस है, कुछ भी गलत होएगा तो आप उसको इरेज नहीं कर सकते, and that's not going to be good. डायग्राम सारी आपने पेंसिल से बनानी है, ठीक है, ताकि आप इरेज कर सको, कुछ चेंजेस कर सको. पेन से नहीं करना, बाकी सब काम पेन से करना है, राइट? बाकी कुछ भी वर्किंग के लिए आपने पेंसिल नहीं यूज करनी, पेन यूज करना है. ओके. ईमान, if you write 49.79 here, that's correct. उसमें मार्क नहीं कटेगा. 49.79 is fine, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने कोई एक्यूरेसी स्पेसिफाई नहीं की है, तो 1 decimal place या उससे ज्यादा हो सकता है. ठीक है, 49.79 is also correct. 49.8 is also correct, but 50 degrees is not going to be correct. उसको 1 decimal place आपको एटलीस्ट चाहिए होगा यहाँ पे. ठीक है, डिग्रीज के अंदर एटलीस्ट 1 decimal place आपको चाहिए होगा. That's your final result. Okay, good. Okay, let's move on. खदीजा, अगर वहां पे x क्यूब होता पिछले क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे x क्यूब होता, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. अगर ऊपर वाले की पावर ज्यादा है नीचे वाले की पावर से, तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. इसका एक और तरीका होता है, कांस्टेंट के बजाय आप बेसिकली ax plus b यहाँ पे ऐड कर देते हो, बट दैट्स नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस. आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का वो वाला केस है जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर्स इक्वल हो जाए. न्यूमरेटर की पावर ज्यादा नहीं होगी, वो आपको पार्शियल फ्रैक्शंस करने की नहीं पूछेगा वो. ठीक है, इक्वल पावर्स हो सकती हैं,
ज्यादा वाला केस आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। वो उसमें फिर कांस्टेंट नहीं आता, कुछ और आ जाता, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, वो आपको नहीं आएगा, ठीक है। ओके, all right, let's move on. So now we've got trigonometry using the expansions of sine of 3x plus 2x and sine of 3x minus 2x. We have to show this thing. Okay. अब आप उसने आपको हिंट दिया, आपको उसको यूज करना है, तो उसने कहा है just use that sine of 3x plus 2x, that's a compound angle, उसको expand कर लें, sine of 3x plus 2x. This is a compound angle. आप फॉर्मूला शीट में जाके देखेंगे, होपफुली आपको याद हो चुकी होंगी अब तक तो सारी आइडेंटिटीज, बट you should still have the formula sheet in front of you. So I have this copied here on the side. Sin a plus b की आइडेंटिटी हमारे पास कौन सी है? That's this one. ठीक है, sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b. वो यहाँ पे अप्लाई कर दें. A is 3x, b is 2x. So it becomes sin a, that's sine of 3x, into cos of 2x, plus cos of 3x into sine of 2x. ये हमारे पास cos 3x plus 2x की expansion आ गई. अच्छा, the second expansion that we have to do is sine 3x minus 2x. That gives us, अब ये माइनस वाले केस में क्या होता है, बस यहाँ पे माइनस आ जाता है आइडेंटिटी के अंदर. So we have sine 3x into cos 2x minus cos 3x into sine 2x. We've got these two expansions. Okay. अब उसने क्या कहा है, आपको ये शो करना है that this thing equals this. Now, how do we think about this? अब देखिए 5x यहाँ पे किधर से आ रहा है? 5x is basically coming from here. 3x plus 2x, 3x और 2x को ऐड कर दें तो आपको 5x आ जाता है, right? और 3x में से 2x माइनस कर दें, आपके पास ये x आ जाता है. ओके, आपने करना क्या है, आप देखें लेफ्ट साइड पे उसने क्या किया हुआ है, sin 5x, यानी जो ये वाली चीज है उसमें ऐड करना है sin of x, ये ऐड करना है. दोनों जो आपके पास एक्सपेंशन है इनको ऐड कर दें, आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है. और फिर 1/2 बाहर लग दें और उसको देखें वो इवैल्यूएट करके क्या आता है. You just have to evaluate this thing and prove that that turns out to be equal to this thing on the right side. So let's do that. देखें sin 3x plus 2x जो है that's the same thing as sin of 5x, right? देखें 3x plus 2x है ना, ये 5x है. और इसी तरह से जो sin 3x minus 2x है that's basically sin of x, because the 3x है ये minus 2x है, ये sin x के इक्वल है. अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये शो करना है, हम ये चीज एग्जैक्टली इवैल्यूएट कर लेते हैं. उसी तरह से उसने क्या रखा हुआ है, 1/2 into sin of 5x plus sin of x. sin 5x की क्या वैल्यू है, it's this thing. sin x की क्या वैल्यू है, it's this thing. इन दोनों को इनपुट कर दें, ठीक है. I'm actually going to write them on the right side here, so you know कि इनको रेफर कर रहे हैं. तो sin 5x की जगह वो डाल दें और sin 3x की, sin x की जगह नीचे वाले डाल दें और उसको बस सिंप्लीफाई कर लें. Now let's do that. So 1/2 into sin 5x, that is sin 3x cos 2x plus cos 3x into sin 2x. ठीक है, ये मेरे पास आ गया sin 5x, ये मैंने इनपुट कर दिया वहां, ठीक है. Now what's sin x? Sin x is basically this thing, ये इनपुट कर दें वहां पे, plus sin 3x cos 2x minus cos 3x sin 2x. अब क्या होगा, ये और ये प्लस हो रहे हैं, इसके बाय 2 आ जाएगा, ये और ये माइनस हो रहे हैं, they get cancelled, so we have this and this cancelled, और हमारे पास क्या बचा वहां पे, हमारे पास अंदर ब्रैकेट्स के बचा 2 times sin of 3x
into cos 2x. And now this 2 and this 2 get cancelled. We're left with sine 3x into cos 2x. ये हमें prove करना था कि this becomes sine 3x cos 2x. That's what we have. Okay, that was 3 marks. Pretty straightforward. Expand here, उनको add कर दिया, and you got the form that you required there. Okay, अच्छा, so that was the first part. Let's look at the next one. It says, hence show that this integral evaluates to this thing. अच्छा, वैसे तो ये product है, right? It's sine 3x into cos 2x. इसको अगर आप direct integrate करने का सोचते हैं, it would have been very complicated because मसला ये है कि एक angle 3x है, दूसरा 2x है. इसको using the method that we know, at least we would not even able to do that unless we use some trigonometry, और वो change करके end पे हमारे पास यही आ जाता जो हमने ऊपर prove किया. So basically हमने use करना है अपना previous part में हमने क्या prove किया है? Sine 3x cos 2x, it's basically the same thing as this 1/2 into sine 5x plus sine x. तो अब उसकी जगह पे ये डाल दो. ठीक है, अपने इंटीग्रल के अंदर अब क्या करेंगे, आप इसको रिप्लेस कर देंगे using the first part with 1/2 into sine 5x plus sine x. अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसमें लिमिट्स इनपुट करनी है 0 से लेकर π/4 तक, right? 1/2 into sine 5x plus sine x. Yeah, so that's correct. अब ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको तो हम बाहर लिख सकते हैं इंटीग्रल के. Yes, exactly. So 1/2 को बाहर लिख लें just to simplify things, क्योंकि उसको तो इंटीग्रेट करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब sine 5x को इंटीग्रेट कर लें. How do you integrate? Yeah, you can break it if you want, or you can just do it directly. मतलब individually करना है ना आपने सबको. So sine 5x plus sine x, इनको अलग अलग इंटीग्रेट करना है. इसमें डिफरेंशिएशन भी अलग अलग करते हैं, इंटीग्रेशन भी अलग अलग करते हैं. sin 5x को अलग इंटीग्रेट कर लें. What's the integral of sine 5x? Sine का integral is minus cos x, right? Sine का integral is minus cos. तो ये बन जाएगा sine 5x converts to minus cos 5x. But that's not enough. We have to divide by the derivative of 5x. That is 5. 5 से इसको divide कर देंगे. ठीक है? And then what's the derivative of sine x? Sine का derivative is minus cos x. X का derivative 1 है. Sorry, sine का integral is minus cos x. So we have minus cos x here. और फिर x के derivative से divide करेंगे, वो 1 ही है. It doesn't really matter. This is what we end up with. ये हमारी integration होगी. अब limits input करनी है 0 से लेकर π/4 तक. Let's input the limits. ये limits input करके दिखाना जरूरी है. Don't just do it directly on a calculator और आप आंसर लिख दें. लिमिट्स इनपुट करनी है, उसके बाद आप कैलकुलेटर से इवैल्यूएट कर सकते हैं, दैट्स ओके. लेकिन लिमिट्स इनपुट करके दिखाना इज एब्सोल्युटली नेसेसरी. ठीक है, उसका एक मार्क होता है. लिमिट्स इनपुट करते हैं, π/4 इनपुट कर दें. ओके, सो व्हाट हैपेंड देयर? π/4 इनपुट कर दें. वी हैव minus cos into 5 π/4 divided by 5 minus cos π/4. ये आपने π/4 इनपुट किया. इसमें से माइनस कर दें कौन सा केस? 0 वाला. So we have minus cos 0 divided by 5 and minus cos 0. 1/2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है सब के साथ. Now you can simplify this. देखिए अंदर क्या आता है. I would recommend that you do it step by step because इसमें careless errors बहुत ज़्यादा होते हैं. अगर आप कैलकुलेटर में डायरेक्टली डालोगे, there's a very high probability कि आपका आंसर एंड पे सही नहीं आ रहा होगा. आप कोई ना कोई ब्रैकेट्स की मिस्टेक कर दोगे. Do it step by step. पहले ये वाला ब्रैकेट इवैल्यूएट कर लें और उसके बाद दूसरा ब्रैकेट इवैल्यूएट करें. ओके, डोंट रश थ्रू इट. टाइम लगा लें इस पे, थोड़ा सा कुछ नहीं होता. 1-2 मिनट आप लगा सकते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि आपने वर्किंग तो आपको आता है जब, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डूइंग इट करेक्ट, राइट? ओके, minus cos 5 π/4, ये क्या आता है हमारे पास? Can somebody do this for me quickly? 5 π divided by 4 and then divided by 5 और इसमें से माइनस कर दिया cos pi divided by 4. उसने एग्जैक्ट फॉर्म तो नहीं मांगी, उसने एग्जैक्ट फॉर्म मांगी, राइट? सो यू नीड एग्जैक्ट आंसर एट द एंड.
cos 5 pi/4 का एग्जैक्ट फॉर्म क्या आती है? चेंज माय एंगल का यूनिट आपने ध्यान रखना है, आप रेडियंस यूज कर रहे हैं, ये रेडियंस है। Okay, cos 5 pi divided by 4, that gives me minus square root of 2/2. Fazain, it's the same thing, doesn't really matter. अलग अलग भी लगाएंगे eventually आपके पास सेम आ जाएगा। आप लिमिट्स अलग अलग भी इनपुट कर सकते हैं, इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं, इट्स द सेम थिंग। ओके, अच्छा, सो माइनस cos 5 pi/4, ये मैं इवैल्यूएट कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है माइनस इंक्लूड करके, अच्छा पुट माइनस देयर, minus into minus square root of 2/2 divided by 5, and then I have minus cos 5 pi/4, cos pi/4 क्या होता है? That's square root of 2/2. ये मेरे पास फर्स्ट ब्रैकेट आ गई, इसमें से माइनस करना है, minus cos 0 is 1, so that's minus 1/5 and then minus 1. अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, you can do it directly on your calculator, you don't have to do all of this manually. ये कैलकुलेटर में डालें, ये माइनस और माइनस का प्लस हो गया, this becomes square root of 2/10 minus square root of 2/2 and then plus 1/5 plus 1. इसको evaluate करें, देखें क्या आता है। Square root of 2 divided by 2 divided by 10 minus square root of 2 square root of 2 divided by 2 plus 1 divided by 5 plus 1, और बाहर मेरे पास 2 भी आ रहा है, 1/2 भी आ रहा है, तो 2 से डिवाइड भी कर दिया। I end up with 3 minus square root of 2 divided by 5. उसने क्या फॉर्म मांगी थी आपसे? अच्छा, वो आपने ये प्रूव करना था, तो आप इसको आगे लिख दोगे, that is 1/5 into 3 minus square root of 2. That's what you've got. अब देखें, इसमें आप, क्योंकि आपने शो करना है, इसमें आपकी वर्किंग और भी केयरफुली चेक होगी, तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप सारे स्टेप्स शो कर रहे हो, ठीक है? तो आपको ये इनपुट करनी पड़ेंगी वैल्यूज, लिमिट्स पहले, फिर ये स्क्वायर रूट फॉर्म में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं कैलकुलेटर से वो दिखाने पड़ेंगे, उसके बाद ये वाली कैलकुलेशन तो आप डायरेक्टली बेसिक कैलकुलेटर से कर लो, दैट्स ओके, सिंपल अलजेब्रा, सिंपल प्लस माइनस तो नहीं टेस्ट कर रहा आपके, लेकिन ये वैल्यूज इनपुट करके जरूर दिखानी है, इवैल्यूएट करके भी एग्जैक्ट फॉर्म में आपको दिखानी है, ठीक है? ओके, आई होप दैट मेक्स सेंस टू एवरीवन। कैन वी मूव ऑन? इज दैट ओके? All right, let's move on to the next one. Khadija, just put that on your calculator. You don't have to worry about remembering that. Cos 5 pi/4 calculator में डालना सीधा. Make sure that your calculator is in gradient mode. And my calculator, if I do this, cos 5 pi divided by 4, this gives me minus square root of 2/2. If your calculator is not giving you this exact form, change your calculator. Upgrade your calculator. You need to have a calculator that gives you exact forms like this. ठीक है? आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से निकालेंगे, उसको लिख देंगे। All right? Okay. All right, let's move on to the next question. Question number 7. The variables x and y satisfy this differential equation. So now we've got differential equation. It's given that y equals 1 when x equals 0. एक point आपको दिया हुआ है. We have to solve this differential equation, obtaining an expression for y in terms of x. Okay. अच्छा, so the question is straightforward, right? आपने सिर्फ differential equation को solve करना है.
Khadija, it's giving you minus 0.707. That's fine. Square root of 2 over 2 की जो डेसिमल फॉर्म है, that's minus 0.707. लेकिन अगर आप वो बटन प्रेस करें, ये वाला जो होता है कैलकुलेटर के ऊपर, if that does not give you exact form, इसका मतलब है कि आपको अपना कैलकुलेटर चेंज कर लेना चाहिए. Get a calculator that gives you this exact form. आपको ये exact form मिलनी चाहिए कैलकुलेटर से. You don't have to remember all of these values. ये आपको याद नहीं करनी है. ये आप कैलकुलेटर वो रखेंगे जो वैल्यूज आपको दे देगा ये डायरेक्टली. ठीक है? All right. Let's move on. Let's move on to the next one now. So this is the differential equation that we have to solve. How do you solve differential equation? सबसे पहले काम आपको क्या करना होता है? You have to separate the variables. Variables separate करने हैं. dy लेफ्ट साइड के ऊपर है, लेफ्ट साइड पे सारे y वेरिएबल्स आ जाएंगे, dx को राइट पे ले जाएंगे और राइट साइड पे सारे x वाले वेरिएबल्स ले जाएंगे. So how do we do that? y को लेफ्ट पे ले जाएं, 1 over y square dy, x वाली टर्म्स को राइट पे ले जाएं. So we have 4x divided by t raised to power 2x dx. ये हमने सबसे पहले क्या किया? वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया. ठीक है? That's the first thing that we've done here. अब क्या करें? अब इसको इंटीग्रेट करना है दोनों साइड्स को. लेफ्ट साइड को we can write as y raised to power minus 2 dy. इसको ऊपर लेकर आ सकते हो. We have enough space. Okay. We can bring y square to the numerator like this. Right side पे we have 4x into e raised to power minus 2x dx. ठीक है? And now we've got to integrate both sides. Left side को integrate करेंगे with respect to y, right side को integrate करेंगे with respect to x. ठीक है? अब integration लगा कर दी. Left side पे क्या हो जाएगा? y raised to power minus 2. What's the integral of this with respect to y? Power में 1 add कर दिया. Minus 2 plus 1, that becomes minus 1 divided by minus 1. Okay? ये आपके पास integral आ गया left side के ऊपर. Now on the right side you've got a product. On the right side you've got a product. अब product को कैसे integrate करते हैं? There are only two methods that we have for integrating products. एक integration by parts और दूसरा substitution. Substitution जब भी होती है वो आपको बताता है क्वेश्चन के अंदर कि आपने substitution यूज करनी है. तो अगर substitution नहीं बताई हुई है उसमें कोई, आपको पास एक ही ऑप्शन बची, that is integration by parts. तो आप वो यूज करोगे यहाँ पे, integration by parts. That's what we are going to be doing. Okay? अच्छा, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला उसमें दिया होता है फॉर्मूला शीट के अंदर. आई एम गोइंग टू राइट दैट हियर. फॉर्मूला शीट में उसने ये वाली फॉर्म दी होती है, कुछ लोगों ने ये वाली फॉर्म की हो शायद, बट आई जनरली यूज द वन दैट्स गिवन इन द फॉर्मूला शीट, ताकि अगर आप भूल जाओ यू हैव समथिंग टू रेफर बैक टू. तो फॉर्मूला शीट में आप देखें उसमें इंटीग्रेशन के लिए ये दिया होता है, u dv over dx का इंटीग्रल क्या होता है? दैट्स बेसिकली दिस. ठीक है? नाउ लेट मी राइट दैट हियर on the side so we can refer to that. U into dv over dx का इंटीग्रल with respect to x, ये क्या होगा? uv minus integral of v du over dx. That's what the formula looks like. This is the integration by parts formula. Okay? अगर आप यहाँ पे देखोगे उसने बस यहाँ पे ये dx लगाया है, इसका मतलब सेम कि with respect to x इंटीग्रेट करना है. ये भी dx का मतलब है with respect to x इंटीग्रेट करना है. But in terms of the formula, the values that you are actually going to be inputting, you've got u dv over dx on the left side, v du over dx here on the right side. Yeah, so दूसरा फॉर्मूला आप लोगों ने ये भी देखा होगा, uv, but that's not what's given in the formula sheet, right? So अगर आप भूल जाते हो वो, then you don't have a backup, right? So that's why I would recommend you do it this way. Okay? या अगर आपको confirm है, आपको वो याद रहेगा, then that's okay. You can do that. अच्छा. Now, the problem with integration by parts is that we have to figure out u किसको लेना है, dv over dx किसको लेना है. ठीक है? हमने इसके कुछ रूल्स पढ़े हुए हैं कि अच्छा u सिंपल हो जाना चाहिए डिफरेंशिएट करने के बाद, dv over dx ऐसा होना चाहिए जो इंटीग्रेट हो सकता हो. लेकिन we have a thumb rule for this. हमने क्या कहा था? We've got I late
इसको हम देखा करेंगे. I stands for inverse trigonometric function यानी tan inverse, L stands for log, A stands for algebraic expressions, X की terms में कुछ X square, X इस तरह से कुछ आ रहा हो. T means trigonometric function, sin cos tan, E means exponential function, e raised to power something. जो भी आपके पास फंक्शंस हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल you've got X, 4 को तो आप बाहर लिख सकते हैं ना, तो 4 को हम बाहर लिख लेते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन पे, उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है. Just simplify this. You got two things here. एक आपके पास x है. x क्या है? x is an algebraic function. एक आपके पास क्या है? e raised to power minus 2x. That is exponential. I late के अंदर जो चीज लेफ्ट पे आ रही होती है, you take that as u. जो चीज राइट पे आ रही होती है, you take that as dv over dx. ठीक है? You can just remember this. हाईलाइट के अंदर जो लेफ्ट पे आ रहा होता है उसको यू लेते हैं, जो राइट पे आ रहा होता है उसको डीवी ओवर डीएक्स देते हैं. लेफ्ट पे कौन सा आ रहा है? अलजेब्रिक लेफ्ट पे आ रहा है, इन दोनों में से उसको आप यू ले लोगे. एक्सपोनेंशियल राइट पे आ रहा है, उसको आप डीवी ओवर डीएक्स ले लोगे. राइट, सो दैट्स व्हाट वी डू हियर. आई वांट टू जस्ट mark that here. I'm saying I'm going to use this as u and this as dv over dx. ठीक है? Now I just have to input values in the formula and that's it. 4 बाहर वैसे ही रहेगा. ठीक है? And then I have u into v. फॉर्मूला में देखें, u times v. u as it is आ गया, which is x into v. v क्या है? इसका इंटेग्रल. e raised to power minus 2x का इंटेग्रल क्या होगा? e raised to power minus 2x as it is. e power x का इंटेग्रल e power x ही होता है, but then we divide by the derivative of this power, that is minus 2. Then we have this minus sign, minus integral of v. Again, what's v? v is e raised to power minus 2x over minus 2. जब मैं यहाँ पे भी evaluate किया था, into du over dx. What's du over dx? u का derivative, x का derivative is 1. ये हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया. Now we just integrate this thing with respect to x as well. Now we simplify this right side. Left side पे तो हमारे पास क्या आ रहा है? Left side पे हमारे पास आ रहा है minus 1 over y. On the right side we have 4 into minus 1 over 2 x e raised to power minus 2x. ये minus 2 को आप बाहर लेकर आ सकते हो, कांस्टेंट ही है ना, इसको बाहर लिख सकते हैं. So we've got this minus it becomes plus. So we have plus 1 over 2 integral of e raised to power minus 2x. So let me actually just do one more step just so you don't get confused. अभी मैंने सिर्फ क्या किया? अभी मैंने इस 2 को बाहर लिख दिया. ठीक है? So that becomes 1 over 2 outside. And now I still have to integrate this thing that I have inside the integral. So I get everything else as it is. इसका इंटेग्रल अब क्या होएगा? e raised to power minus 2x का इंटेग्रल, that is e raised to power minus 2x over minus 2. Yes, Fazan, you can do that. You can list down everything on the side और फिर जाके input कर दें. That's also fine. आपको बार बार लिखना नहीं पड़ता है सब कुछ, बाकी चीज आप वैसे ही लिख रहे हो. So that's helpful. Yes, जिस तरह हम product rule में भी करते थे, differentiation में अलग अलग लिख देते थे. You can just write down all the integrations and derivations अलग से. That's good. So for example, in this case, you know कि u is x, तो du over dx आपको चाहिए यहाँ पे. That is 1. dv over dx आपके पास क्या है? That is e raised to power minus 2x. तो v क्या होगा आपके पास? e raised to power minus 2x over 2. तो ये आपने बस values input करनी है जाके formula के अंदर. ये आप कर सकते हैं. Yes, so that's correct. ये जाके वहाँ पे input कर दें. Now we just have to simplify this. We get minus 1 over y equals अब ये 4 को अंदर multiply भी कर देते हैं. Minus 4 over 2 x e raised to power minus 2x, 4 into this 2 and this minus 2. वो minus आ रहा होगा वहाँ पे. So that's minus 4 over 4 e raised to power minus 2x. ठीक है? Now I simplify this further. I get minus 1 over y equals minus 2x e raised to power minus 2x minus e raised to power minus 2x. Are we forgetting something? Is this correct until this point? इसमें कोई मसला तो नहीं है? Or are we missing something?
ये सही है? कोई चीज यहाँ पे होनी चाहिए थी जो हमने मिस कर दी? Seems okay? Anything that we're missing? We're missing a C there. Constant का है. इंटीग्रेट करके किसी भी एक साइड पे आपने कांस्टेंट लगाना, ठीक है? तो राइट साइड पे हमने C लगा दिया, राइट पे लगा दें, लेफ्ट पे लगा दें, डजंट मैटर. एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द C को फाइंड कर लें. उसके बाद आपको क्या करना है? आपने y इन टर्म्स ऑफ x लगता है, ठीक है? तो C आप किसी भी साइड पे ऐड कर सकते हैं, राइट पे कर लें, लेफ्ट पे कर लें, डजंट मैटर. अब आपको C की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, लेकिन उसके लिए उसने क्या बताया हुआ आपको? उसने बताया y equals 1 when x equals 0. वो इनपुट कर दें. So we say let's input x equals 0 and y equals 1. ठीक है? And let's see what we get from that. Minus 1 over 1 on the left side. On the right side, we've got minus 2. ये तो 0 हो जाएगा पूरा first term. And then we have minus e raised to the power 0 plus c. What does that give us? Minus 1 equals minus 1 plus c. c की वैल्यू क्या आ गई? c की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है. ये आती है 0 आ रही है ना? c turns out to be 0. ये कैलकुलेशन ठीक है? यहाँ पे x की वैल्यू 0 इनपुट कर दी, that becomes 0 minus raised to power 0. That's also fine. And that's 1. Yeah. So c turns out to be 0. ठीक है? Constant 0 आ गया. Now exotic, I'm not sure what your question is. Plus c आप किसी भी साइड पे लगा सकते हो, doesn't matter. लेफ्ट पे लगा दो, राइट पे लगा दो, किसी भी साइड पे लगा सकते हो. ओके, अच्छा, c की वैल्यू 0 आ गई. So now we've got the function like this: minus 1 over y equals minus 2x e raised to power minus 2x minus e raised to power minus 2x. ये हमारे पास फंक्शन था. अब हमें क्या करना है? y in terms of x लिखना है. तो y को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है? Okay. Fazain, is that okay? All right. अच्छा, y को सब्जेक्ट बनाने क्या कर सकते हैं हम? रेसिप्रोकल ले सकते हैं. रेसिप्रोकल अगर इसका ले लें तो, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, रेसिप्रोकल ले लें, दैट्स योर चॉइस. जिस तरह भी आप करना चाहें. लेट्स एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है? और देखते हैं इससे क्या होता है. उससे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें. अगर इसको हमारे पास आ जाएगा e raised to power minus 2x कॉमन यहाँ पे, और अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? minus 2x minus 1. पहले कर लें, बाद में कर लें, डजंट मैटर. y को राइट साइड पे ले गए, उसको इधर ले आए, माइनस भी अगर कॉमन ले लेते बाहर तो अंदर हमारे पास प्लस बच जाता. वी हैव 2x plus 1. अब उसका फायदा क्या होगा? माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है? जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये चीज भी आ रही है, दैट इज 2x plus 1. ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया. वी हैव y equals 1 over e raised to power minus 2x into 2x plus 1. That's your y in terms of x. ठीक है, ये आपको फाइंड करना है. You can leave it like this if you want. You can write it like this. आप वो नेगेटिव पावर को ऊपर ले जाओ. You can write it like this as well. That's also fine. दोनों सही है, कि मसला नहीं है पहले वाली फॉर्म के अंदर भी. So this is fine. This is also fine. That's y in terms of x. ये आपको फाइंड करना है. Yes, exotic. That's correct. That's what I was suggesting. You could do it directly, but just in case, I thought somebody might get confused. ये reciprocal पे एकदम कर दिया. So I just cross multiplied because more people are comfortable with that. Okay, तो वो कर सकते हैं. आप इस पॉइंट के ऊपर, so somebody suggesting आप reciprocal ले लेते, वो सीधा आ जाता. So that's correct. यहाँ पे आप सिर्फ रेसिप्रोकल ले लो, नेगेटिव साइन को खत्म कर दो. दोनों साइड में नेगेटिव है, वो खत्म हो गया. रेसिप्रोकल कर लिया तो आपके पास सीधा आ गया e raised to power minus 2x into 2x plus 1. That's much quicker. That's correct. क्रॉस मल्टीप्लाई करके बजाय हम ये भी कर सकते थे.
Okay, that's good. Okay, Khizr, let me just show that to you. This is the first page. This is the second page. Okay? Okay. Let's move on. Question number 8. Khizr, is that okay? Or should I hold that for a few seconds? Okay, take it. Good. Achha, question number 8. By first expanding cos square theta plus sin square theta whole raised to power 2, show that this is true. अच्छा, अब let's just follow instructions. इसने क्या कहा है? आपने पहले इसको expand करना है cos square theta plus sin square theta का whole square. अच्छा, you know कि ये 1 होता है, right? लेकिन इसको 1 में convert करने का फायदा नहीं है, वो 1 square ही हो जाएगा, right? मजा नहीं हुआ? 1 आ रहा था, वो तो 1 तो आ जाएगा of course. इसको आपने 1 नहीं करना है ना, इसको आपने expand करना है proper. इसको उसको 1 में convert नहीं करना. इसने इसको expand करने का कहा as it is, so we just expand that without converting it to 1. Okay? अच्छा, let's do that. Cos square theta plus sin square theta का whole square, ये हमें evaluate करना है. So that's a plus b whole squared. That's a square, वो क्या हो जाएगा? Cos raised to power 4 theta plus b square, that's sin raised to power 4 theta, plus 2ab, that's going to be 2 cos square theta into sin square theta. ठीक है, ये हमारे पास आ गया. इसको एक्सपैंड करके अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे? cos raised to power 4 theta plus sin raised to power 4 theta एक साइड पे होने चाहिए, everything else on the other side. Let's do that. इसको हम अगर स्विच कर दें, या चलें, let's actually keep it like this. इसको मैं कर लेता हूँ cos square theta plus sin square theta whole squared minus 2 cos square theta sin square theta. On the other side, I have cos raised to power 4 theta plus sin raised to power 4 theta. एक साइड पे तो ये आ गया, मुझे ये चाहिए था एक साइड के ऊपर. अब दूसरी साइड के ऊपर I have to have this somehow. अच्छा, अब आप देखें, आपको पता है cos square plus sin square तो 1 होता है. You can convert it to 1, right? So that's 1 squared 2 cos square theta sin square theta. Now you've got to be now you've got to take a hint here. ये क्या लिखा हुआ है? एंगल 2 थीटा. यहाँ पे एंगल्स क्या आ रहे हैं आपके पास? थीटा. सो बेसिकली डबल एंगल आइडेंटिटी पे यूज हो रही है यहाँ पे टू डू दिस कन्वर्जन. साइन की डबल एंगल आइडेंटिटी क्या होती है? यू गॉट द फॉर्मूला शीट ऑन द साइड. ये आपके पास साइन की डबल एंगल आइडेंटिटी है. साइन 2a इज आइडेंटिकल टू 2 sin a cos a. So that is sin 2a identical to sin 2 sin a cos a. यहाँ पे साथ लिख लेते हैं. So we have that visible here. तो basically हम अगर यहाँ पे 2 cos theta sin theta किसी तरह से बना लें, लेकिन वो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे तो स्क्वायर्स आ रहे हैं, राइट? स्क्वायर हम अगर होल लगाते हैं यहाँ पे cos theta into sin theta का होल स्क्वायर अगर कर दें, हम इस तरह लिख सकते हैं ना इसको. cos square theta और sin square theta है, हम इसको cos theta into sin theta लिख सकते हैं, पूरे का स्क्वायर लगा सकते हैं. got 2 outsides. अब हमें करना क्या है? हमें ये फॉर्म चाहिए जो हमारे पास उस आइडेंटिटी के अंदर आ रही है. आइडेंटिटी के अंदर कौन सी फॉर्म आ रही है? 2 sin a cos a. हमारे पास सिर्फ साइन और cos मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 नहीं आ रहा है यहाँ पे. हमें क्या करना है? यहाँ पे 2 ऐड करना है अंदर किसी तरह से. वो कैसे करेंगे? हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं एक अंदर, कहते हैं लेट्स मल्टीप्लाई बाय 2 हियर. लेकिन अब रैंडमली खुद से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना कोई चीज. आपने 2 अंदर मल्टीप्लाई किया, सो एसेंशियली आप क्या कर रहे हो? 2 स्क्वायर्ड से मल्टीप्लाई कर रहे हो इस एक्सप्रेशन को. तो उसको बैलेंस करने के लिए आप बाहर उससे डिवाइड कर दो. उसको बैलेंस कर दिया आपने. अंदर आपने 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, बाहर आपने डिवाइड कर दिया ताकि वो ओवरऑल बैलेंस हो जाए. इसका फायदा क्या हुआ? ये आपके पास वो sin 2 थीटा वाली फॉर्म बन गई, एंड दैट गिव्स यू 1 minus 1/2
ये 2 और 2 स्क्वायर ये कैंसिल हो गए, आपके पास 1/2 बच गया। 2 cos थीटा sin थीटा क्या होता है, दैट इज sin 2 थीटा, अंदर आपके पास आ गया sin 2 थीटा का होल स्क्वायर, एंड दैट कैन बी रिटन एज 1/2 sin square 2 theta, and that's what we had to show there. Okay, does that make sense? Fazan, which step? ये नहीं समझ आया, ये क्यों मान कर दिया, और तो हमने कुछ नहीं किया। सेकंड स्टेप में मैंने सिर्फ ये किया कि राइट साइड पे इसको मैं लेफ्ट पे ले गया हूँ। वाई? बिकॉज जो प्रूव करना था उसमें मुझे एक साइड पे ये चाहिए, तो मैं राइट साइड वाला जो वो चीज थी उसको लेफ्ट पे ले गया। दैट्स ऑल आई हैव डन, राइट? And then I've changed this thing to 1 because sin square plus cos square is equal to 1. और उसको आगे सिंप्लीफाई कर लिया। बट देन मुझे डबल एंगल चाहिए था, डबल एंगल में मुझे 2 sin a cos a वाली फॉर्म चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे 2 अंदर लगा दिया, लेकिन वो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे बाहर फिर 2 उसके डिवाइड करना पड़ा, बिकॉज अंदर में 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया मैंने अंदर, तो बाहर भी मैंने 2 स्क्वायर से डिवाइड कर दिया टू बैलेंस दैट। ओके, हमजा गलत बात है ये, या थोड़ा सोचना पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर होता है कि आपको उसी पॉइंट पे कुछ इस तरह से नई चीजें फिगर आउट करनी पड़ती हैं। बट आई होप दैट मेक्स सेंस। ओके, ऑलराइट। हमें कैसे पता चलेगा 2 स्क्वायर को डालना है? हमें इस तरह पता चलेगा 2 स्क्वायर को डालना है, क्योंकि हमें फॉर्म क्या चाहिए, हमें चाहिए sin 2 थीटा। हमें sin 2 थीटा होल स्क्वायर ये चाहिए। अब sin 2 थीटा कैसे आएगा, हमारे पास एक ही आइडेंटिटी है साइन की, 2 sin a cos a, राइट? हमारे पास सिर्फ ये आ रहा था sin थीटा cos थीटा, 2 नहीं था वहां पे, तो हमने 2 वहां पे डालना था किसी तरह से, तो हमने 2 डाल दिया, लेकिन खुद से वैसे रैंडम तो नहीं डाल सकते ना। अब जब 2 डाला वहां पे, तो उसको बैलेंस करने के लिए जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 स्क्वायर से डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्यों किया हमने? क्योंकि हमने ये आइडेंटिटी यूज करनी थी, इसलिए हमने किया। ओके, बिकॉज फाइनल आंसर में हमें sin 2 थीटा चाहिए था वहां पे। ऑलराइट, ओके, गुड। Okay, that was the first part. Let's look at the second part now. Hence, solve this equation. यानी कि आपको फर्स्ट पार्ट यूज करना है, cos raised to the power 4 theta plus sin raised to the power 4 theta। आपने प्रूव किया है कि that is the same thing as this। उसको इस तरह रिप्लेस कर देते हैं, 1 minus half sin square 2 theta, that equals 5/9। 1 minus half sin square 2 theta, and yeah, so that's fine. Now we just have to solve this. I can take that to the right, 1/2 sin square 2 theta. 1 minus 5/9, that's going to give me 4/9. And then sin square 2 theta becomes 8/9. ठीक है? अच्छा, sin square 2 theta, remember this notation, हमने बहुत दफा ये डिस्कस किया कि sin square something, that's the same thing as saying sin of that का whole square. So sin square 2 theta का क्या मतलब है? It's the same thing as saying sin 2 theta का whole square, that equals 8/9. तो अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? We will take square root on both sides. इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Square root of 8/3. Are we missing something here? Are we missing something here? Is this fine? ये बहुत सारे लोग ये कर देते हैं, एक चीज यहाँ पे मिस कर देते हैं, वो क्या चीज है यहाँ पे? प्लस माइनस, राइट? प्लस माइनस हमने मिस कर दिया। स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं प्लस माइनस लगाना होता है, unless there's a reason not to, right? In general we always put plus minus। तो आपके पास 2 वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे,
either plus square root of 3 or minus plus square root of 8 over 3 or minus square root of 8 over 3. Now what do? We find the basic angle. Basic angle find कर लें. Sin alpha equals square root of 8 over 3. Basic angle के लिए तो उसको positive कर देते होते. Basic angle देख लें क्या आ जाता है. Degrees में, radians में. Degrees के अंदर है 0 से 180. Okay, sin inverse of square root of 8 divided by 3, that gives us, radians में क्या होगा इसको, 2 degree. पेपर 3 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर्स के अलावा आपने हमेशा रेडियन यूज करना है. Keep that in mind. ट्रिग्नोमेट्री में कभी कभी डिग्रीज यूज करेंगे, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा. वेक्टर्स में कभी कभी डिग्रीज यूज कर सकते हैं, अगेन क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा. लेकिन इनके अलावा हमेशा रेडियन ही हुआ करेगा. इन दो टॉपिक्स के अलावा हमेशा रेडियन होगा, कभी डिग्रीज नहीं होगा पेपर 3 के अंदर. ओके, ये ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे डिग्रीज के अंदर क्योंकि उसने इंटरवल दिया हुआ है इसलिए हम डिग्रीज यूज कर रहे हैं. सो बेसिक एंगल टर्न्स आउट टू बी 70.53 डिग्रीज. दैट्स द बेसिक एंगल. ओके, 70.53 स्क्वायर रूट ऑफ 8 over 3, ये हमारे पास ये आ गया. अब हम क्या करेंगे, हम क्वाड्रेंट्स में देख लेंगे. साइन इज both positive and negative. Positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है. यहाँ पे तो दोनों हो सकते हैं. So we can be in any of the 4 quadrants. लेकिन interval क्या दिया हुआ है 0 से 180. That means either the first quadrant or the second quadrant. इनमें basic angle आप देख लें 70.53 या तो यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है 70.53. एक एंगल आपके पास आ गया 70.53 in the first quadrant. Second quadrant वाला एंगल क्या आ जाएगा 180 minus 70.53. But these are not the values of theta. These are values of 2 theta. 2 theta is either equal to this or equal to this. And I will calculate theta from this. यहाँ से आपके पास आ जाएगा 35.26 आते हैं, 7 आते हैं, जो भी आएगा इसको 3 कर देते हैं. 35.3 degrees and we get some value of theta from here. या देख लें क्या आती है 180 minus 70.53 divided by 2, that is 54.7 degrees. These are the two values of theta that we get, 35.3 or 54.7. Oh yes, you are right. You're actually right. हमारे पास यहाँ पे क्या था 2 theta था, so we are missing something here. You're absolutely right. हमने एक चीज यहाँ पे मिस कर दी. हमने क्या मिस कर दिया, यहाँ पे हमने इंटरवल एडजस्ट नहीं किया. थैंक यू फॉर द रिमाइंडर. थीटा 0 से 180 तक है, सो डोंट फॉरगेट इट लाइक आई डिड हियर. आपने रेंज एडजस्ट करनी है, राइट? थीटा हमारे पास कहाँ पर था, इधर. ओके, थीटा वाज फ्रॉम 0 to 180. रेंज एडजस्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. 2 थीटा की रेंज क्या हो जाएगी 0 से 360. तो जो एंगल्स देख रहे होंगे वो एक्चुअली आप सारे क्वाड्रेंट्स में देखोगे, फिर बिकॉज 0 से 360 है, प्लस माइनस है. We're going to look at all 4 quadrants. We're going to look at all 4 quadrants. So you got here and here. ये सारे quadrants में देख लेंगे. So you have 2 more values as well. Let me write them where. ये 2 values ये आ गई. So we got theta equals 35.3. We got theta equals 54.7. We also have 2 theta equal to 180 plus 70.53. We'll get something from that. Can somebody tell me what this is? And we also have 2 theta equals 360 minus 70.53. We'll get something else from here as well. ठीक है. अच्छा, 250.53 divided by 2, that is 125.3. And the last one is 360 minus 70.53 divided by 2, that is 144.7. So we got these 4 values of theta. Okay, क्योंकि वो 2 थीटा था, इंटरवल आपका थीटा के लिए दिया हुआ था, आपने इंटरवल एडजस्ट किया, 0 से 180 को आपने 0 से 360 कर दिया, और फिर आपने चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर वैल्यूज देखी.
Ahmed, you should always multiply first. Yes, you should always multiply first, then add. So for example, if you had 2 theta plus, I don't know, let's say 40, तो in range आप कैसे adjust करते? आप इसका step by step जाते हैं. Let's say theta is between 0 and 180. You first do 2 theta. That's going to give you 0 to 360. And then you do 2 theta plus 40. That's going to give you 0 plus 40. And 360 plus 40. So ये हो जाएगा 2 theta plus 40 is between 40 and 400. So you do multiplication first and then addition or subtraction. Yes. और फिर end पे क्या करेंगे? End पे बस आपके पास जो भी आ रहा है उसको आप उससे equate कर दोगे और उसको as a linear equation solve कर लेंगे. इससे बहुत सारे लोग end पे for some reason उन्होंने कुछ याद किया होता है कि अच्छा पहले यहाँ पे ये करना है multiplication बाद में division. End पे आपको सिर्फ एक linear equation solve करनी है. अगर for example 2 theta plus 40 होता है यहाँ पे and that was equal to let's say एक basic angle हमारे पास आ रहा था, एक angle आ रहा था 70.53. इसको आपने just as a linear equation solve करना है. उसके बाद अगर हमारे पास एक ही angle आ रहा होता है end पे, आप इसको as a linear equation solve करोगे, तो हम normal equation solve करते हो. 70 में से 40 minus कर दिया, that's 30.53, and then theta turns out to be 15.3 from that. अगर आपके पास ये होता 2 theta plus 40 for instance, right? So that's what you would do in that case. All right, I was just answering a question there. That's not relevant to this particular question. Okay, so I hope that makes sense. Let's move on to the next part. Okay, now we have question number 9. And this is differentiation. आपके पास एक curve है, आपने dy over dx find करना है. Okay, now this is a form in which we do not have y as the subject. Y subject नहीं है. Y subject नहीं है तो उसका क्या मतलब है? हमें implicit differentiation use करनी पड़ेगी. ठीक है? We can't do simple differentiation. Implicit differentiation use होगी. Now how do we do that? This is the equation. हम क्या करेंगे? दोनों sides को with respect to x differentiate कर लेंगे. So we differentiate both sides with respect to x. Okay? अच्छा, अब ये products हैं देखें. y into e raised to power 2x and y square into e raised to power x. They are both products. इन पे product rule लगेंगे. Let me do this first. This is the first thing that we have to do. Y, अच्छा, product rule यहाँ पे लिख देता हूँ. Product rule क्या होता था? u v का derivative क्या होता है? It's u v dash plus u dash v. ठीक है, ये formulation में दिया भी होता है. In case you forget, although you should not forget it, it's pretty straightforward. U as it is, y as it is, e raised to power 2x का derivative, that's e raised to power 2x into 2 plus derivative of u, जो first आपके पास expression है, इसका derivative. Let me actually write that down here as well. Okay, so I'm taking this as u and this as v here. Second वाले में मैं इसको u ले रहा हूँगा, इसको v ले रहा हूँगा. अच्छा. So u as it is, derivative of v, that's e raised to power 2x into 2. And then derivative of u, यानी y का derivative. Y का derivative क्या होगा? What's the derivative of y with respect to x? Is it 1? Or is it something else? Derivative of y with respect to x, this should be dy over dx. Derivative of y with respect to x is dy over dx. Okay? x का derivative with respect to x 1 होता है. y का derivative with respect to x क्या होगा? It's going to be dy over dx. ठीक है? अच्छा. u v as it is, यानी कि e raised to power 2x हमारे पास as it is आ जाएगा. ये हमारा इस yellow part का derivative आ गया. ठीक है? Now we've got to differentiate the second thing. y square into e raised to power x, बाहर minus लगा हुआ है, वो वैसे रहने देते हैं. अंदर हम इसको differentiate कर लेते हैं. Again, uv dash plus u dash v. Then this is implicit differentiation. You may need to review some things, I think. Y square का derivative,
y square as it is, derivative of v, that is e raised to power x, plus u का derivative क्या होगा? Now this is a power y square को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? 2 into y, okay, 2 आके मल्टीप्लाई हो गया, y की पावर कम होगी, and then the derivative of what is inside the power, y का derivative क्या होता है? y का derivative होता है dy over dx. That's the derivative of y square, and then v as it is, v is e raised to power x. ये आपके पास डेरिवेटिव हो गया लेफ्ट साइड का, ठीक है। अब राइट साइड पे आपके पास 2 है, डू नॉट फॉरगेट टू डिफरेंशिएट दैट एज वेल, उसको 2 नहीं रहने देना, आपने दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग। अब dy by dx को मैं सब्जेक्ट बना लेना सिर्फ, ठीक है। dy by dx वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें। सो वी हैव e raised to power 2x यहाँ से, and we have 2y into e raised to power x. Sorry, let's do another step just to make sure you are not confused. E raised to power x, in fact 2x, minus 2y e raised to power x dy with dx. मैंने dy with dx वाली टर्म्स इकट्ठे रख लिए हैं, ठीक है। ओके, dy with dx वाली टर्म्स इकट्ठे लिख ली। अब जो बाकी टर्म्स है, आई कैन टेक देम टू द राइट साइड। y स्क्वायर e raised to power x वो राइट साइड पे चला गया क्योंकि उसमें dy by dx नहीं है, और 2y e raised to power 2x ये चीज जो है ये भी राइट साइड पे चलेगी, ठीक है। ओके, वो चीज भी राइट साइड पे चलेगी, उसमें भी हमारे पास dy by dx नहीं है। अब dy by dx को कॉमन ले लें, and you are left with e raised to power x minus 2 y e raised to power x here, that equals y square minus 2y e raised to power x, in fact 2x, यहाँ पे e raised to power x भी था, e raised to power x. Am I missing something? मैंने कोई 2x मिस कर दिया? या यहाँ पे 2x मिस कर दिया। Okay, now I have dy with dx that equals हमें क्या प्रूफ करना था? Are we getting that stage? Okay, almost y square e raised to power x minus 2y e raised to power 2x divided by e raised to power 2x minus 2y e raised to power x. This is what we are getting. उसने क्या दिया हुआ है? उसने दिया हुआ है that's slightly different. अच्छा, उसके पास e raised to power 2x नहीं आ रहा कहीं पे। Let us see what we can do. E raised to power x. Oh yeah. So what we can do is we can take e raised to power x common. We can take e raised to power x common. कैसे? देखिए e raised to power हमने ये शो करना है। अगर तो उसने सिर्फ dy with dx मांगा होता है ना, you could actually leave it at this point. Okay? लेकिन उसने कुछ शो करने के लिए कहा हुआ है, उसमें e raised to power 2x नहीं आ रहा कहीं पे। आप क्या कर सकते हो? e raised to power 2x को आप लिख सकते हो e raised to power x का whole square. Can I do that? E raised to power 2x is the same thing as e raised to power x whole square. And similarly, this e raised to power 2x I can write as e raised to power x whole squared. And then I can take e raised to power x common from both the numerator and the denominator और वो खत्म हो जाएगा. So e raised to power x into y square minus 2y e raised to power x divided by e raised to power x common here. We have e raised to power x minus 2y. ये cancel हो गया. अब मेरे पास क्या बचा? y square minus 2y e raised to power x and e raised to power x minus 2y. Now it's exactly the same as what was given there. The only difference is वो interchange हुई हुई terms दोनों, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं? इसको multiply कर दें, इसका एक ट्रिक होता है। So basically, if you have anything like this, a minus b, if you have a minus b over c minus d, that's equivalent to b minus a over d minus c. अगर आप दोनों
को इंटरचेंज कर दो, दैट्स द सेम थिंग, राइट। तो अब एक चीज ये हो सकती है कि न्यूमिनेटर में से माइनस कॉमन लेकर डिनोमिनेटर में लगा दें। एक और तरीका ये हो सकता है, आप मल्टीप्लाई कर दें -1/-1 से, ओके। -1/-1 से मल्टीप्लाई कर दिया, what do you get from that? You get 2y e raised to power x minus y square divided by 2y minus e raised to power x, and that's what we had to prove. That's dy by dx. Okay. Yes, Khazir, that's fine. You can take minus common, and that will also work. All right. Okay, let's move on. Find the exact coordinates of the point on the curve where the tangent is parallel to the y-axis. Okay. Again, it's a question that a lot of people end up doing a very similar mistake. Every single time they do it. 2y e raised to power x minus y square divided by 2y minus e raised to power x. That's the derivative. That's dy by dx. Now it says that find the exact coordinates of the point on the curve where the tangent is parallel to the y-axis. Parallel to y-axis का क्या मतलब होता है? Vertical line. Parallel to y-axis means vertical line. Vertical line का gradient क्या होता है? Vertical line का gradient होता है undefined. Right? Undefined का क्या मतलब है? Denominator में 0 आ रहा होता है. Denominator में 0 आ रहा होता है. तो जब भी पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, आपने dy और dx पूरे को 0 से इक्वेट नहीं करना, ये नहीं करना आपने। वो x एक्सिस के पैरेलल जब होगा तब आप 0 से इक्वेट कर लोगे, बिकॉज दैट विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन। y एक्सिस के पैरेलल है, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे डिनोमिनेटर में 0 आना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है इसको 0 से इक्वेट कर दोगे। सो यू हैव 2y minus e raised to power x equals 0. Denominator को 0 से equate कर देना. Now what do we get from this? We get 2y equals e raised to power x. आपने coordinates find करने हैं. You've got one equation here. You've got another equation already given in the question. ये point curve के ऊपर lie करता है ना, तो curve की equation को भी satisfy करेगा of course. एक equation तो आपके पास ये आ गई, जो आपने यहाँ पे find कर ली. Denominator को 0 से equate करके. दूसरी इक्वेशन आपके पास कहां से आएगी? जो उसने ओरिजिनल दी हुई है कर्व की इक्वेशन. एक कर्व की इक्वेशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए ऑफ कोर्स, बिकॉज़ वो पॉइंट कर्व पे ही लाई करता है. सो यू गॉट टू इक्वेशंस. y, ये दूसरी इक्वेशन क्या आ गई? y e raised to power 2x minus y square e raised to power x equals to. ये आपके पास दूसरी इक्वेशन, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें. ठीक है. सो आप क्या कर सकते हैं? आप y की जगह पे e raised to power x डाल दें, या आप e raised to power x की जगह पे y डाल दें. That's your choice. So let me actually do this. मैं क्या करने लगा, मैं यहाँ पे इसको पहले और फॉर्म में कर लेता हूँ. तो मैं लिख सकता हूँ y e raised to power x whole square minus y square e raised to power x equals 2. ठीक है. अब मैं क्या करने लगा, मैं इसको यहाँ पे इनपुट करने लगा, e raised to power x की जगह पे मैं y डालने लगा. ओके, दैट्स वन वे टू डू इट. आप ये भी कर सकते हो कि y की जगह पे e raised to power x कर दो. दैट्स योर चॉइस, डजंट मैटर. What do we get from this? We get y into y ka square minus y square into y, that equals 2. And that gives us something pretty odd. So everything is cancelled out, I think. Right? So that's not helpful. यहाँ पे तो सब कुछ cancel हो गया. Let me just have a look at this again. 2y minus e raised to power x. 2y equals e raised to power x. This is fine until this point. अच्छा, are we missing something here? Right side पे 2 आ रहा है, e raised to power x की जगह पे हमने y डाल दिया. That becomes y cube, and y cube that cannot possibly equal 0. y square था ऊपर और e raised to power x था. y e raised to power 2x minus this. यहाँ तक तो ठीक है. डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पे सही आ रहा था.
2y minus e raised to pi x, that was fine. Okay, so e raised to pi x के ऊपर 2y डालना था. So yeah, so I made a mistake there. This should have been 2y. Okay. All right. So I think it's too late now. I'm making too many careless errors. E raised to pi x की जगह पे हमने 2y डालना चाहिए था. Where is that? ये हमने यहाँ पे डाला था और हमने यहाँ पे डाला था. Okay. That's y into 2y. The whole square minus y square into 2y, that equals 2. All right. Okay. 4y cube minus 2y cube, that equals 2. अच्छा, अब इससे हमें क्या मिला? 2y cube equals 2y cube equals 1 and y turns out to be equal to 1. Y की value 1 आ गई. Now we input this back in that equation. यहाँ पे जाके इसमें input कर दें. 2 into 1 equals e raised to power x. E raised to power x की value हमारे पास 2 आ गई. दोनों sides पे log ले लें. ln e raised to power x equals ln 2. उसने exact coordinates मांगे आपसे. Decimals में नहीं convert करना. We have x ln e equals ln 2, x equals ln 2. Point के coordinates के आगे हमारे पास ln 2 and 1. These are the coordinates of the point that we were looking for. ठीक है? Parallel to y-axis का मतलब होता है denominator को आपने 0 से equate कर दिया. We got an equation from that. और curve की equation भी थी ऊपर. दोनों का मैं simultaneously solve कर लिया. And we got the point. Okay. All right. Let's do the last one now. That's question number 10. Is it the last one? Oh no, we have 2 questions left. We are a bit slow. Okay, let's be quick now. With respect to the origin O, the position vectors of the points A and B are given by OA equals this and OB equals this. Find a vector equation for the line through A and B. Equation find करनी है. आपको क्या चाहिए होता है equation के लिए? What's the standard form of the equation of a straight line in 3 dimensions? R equals A plus lambda D. आपको एक पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो आप ए बी में से कोई भी पॉइंट ले सकते हो. और डायरेक्शन वेक्टर क्या होएगा? ए बी फाइंड करना पड़ेगा आपको. दैट विल बी द डायरेक्शन वेक्टर. लेट्स फाइंड दैट. ए बी वेक्टर is equal to OB minus OA. What does that give us? OB में से OA minus कर दें. 0 minus 1 is minus 1. 3 minus 1 is 1. 1 minus minus 1, that's going to be 2. This is the position, this is the direction vector. या आपके पास D आ गया. A is any point. तो equation क्या होगी आपके पास? OA या OB में से कोई भी एक पॉइंट ले लें. Let's say मैं B ले लेता हूँ. That's 0, 3, 1 plus lambda D is minus 1, 1, 2. That's the equation of a line that passes through A and B. ठीक है, यहाँ में equation लिखते हैं. All right, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. IJ के फॉर्म में लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं. That's okay. ठीक है. अच्छा, let's move on. The point C lies on L. अच्छा, ये line को हमने L नाम दिया. Yes, this line is L. There's a point C that lies on this line as well. Yeah, maybe थक गया हूँ. Let's try to wrap this up. Yeah, the point C lies on the line L and is such that AC vector equals 3 times AB vector. अच्छा, AB vector तो आपने निकाला हुआ है. That's pretty straightforward. AC vector is equal to 3 times AB. 3 times AB. AB was minus 1, 1, 2. ठीक है. आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ सी निकालना है, यानी कि OC फाइंड करना है आपको. AC को आप लिख सकते हो कैसे? OC minus OA in its position vector form. ये क्या आ गया? -3, 3 and 2. अब OA को जाके वहां पे ऐड कर दें. You have -3, 3, 2
plus OA. OA is 1, 2, minus 1. And that gives us minus 2, 5, and 1. This is the position vector of the point C, minus 2, 5, 1. Is that okay? इसमें मसला नहीं लगा 2 और OA हमने पॉइंट क्या दिया था -1. दैट इज करेक्ट. 3 से मल्टीप्लाई हम करना हमने यहाँ पे गलत कर दिया. -1 1 2 था. इट शुड हैव बीन 6 हियर. ये 6 होना चाहिए था, तो ये भी 6 होना चाहिए था, और फिर हमारा 6 - 1 ये 5 आना चाहिए था. दैट्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ C दैट वी हैव. ठीक है. Okay, let's move on. That was pretty straightforward. Find the position vectors of the point P on L such that OP, यानी कि origin से उसका distance point P का, that is square root of 14. Okay, now P is a point that lies on the line L. So एक origin होगा कहीं पे, line L है, let's say that's somewhere here. इस line को L कह देते हैं. एक point P है जिसका ऊपर lie करता है कहीं पे, let's say this point P. OP लेंथ उसने बताई है स्क्वायर रूट ऑफ 14 है. पोजीशन वेक्टर्स आपने फाइंड करना है उसके. अच्छा, अब लाइन L के ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो किस फॉर्म का होगा? हमने इक्वेशन तो निकाली हुई है लाइन L की. लाइन L की इक्वेशन क्या है? दैट वाज 0 3 1 प्लस लैम्डा -1 1 2 ये आपके पास हर पॉइंट जो लाइन L के ऊपर लाई करता है दैट इज ऑफ दिस फॉर्म. इस फॉर्म का होना चाहिए, बिकॉज जो भी पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है वो इसी फॉर्म का. ठीक है, तो OP P का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो भी क्या होएगा? वो इसी फॉर्म का होएगा. It's going to look like this: 0 plus lambda into -1, that's minus lambda, 3 plus lambda, and 1 plus 2 lambda. This is the position vector of P. इस फॉर्म का होना चाहिए. अब उसने क्या कहा है? OP की जो लेंथ है वो स्क्वायर रूट ऑफ 14 है, यानी कि OP का जो मैग्नीट्यूड है दैट शुड इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 14. अब मैग्नीट्यूड इसका कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? x² + y² + z² और उसका स्क्वायर रूट. सो दैट्स माइनस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 3 plus lambda whole square plus 1 plus 2 lambda whole square, and then square root of that. That should equal square root of 14. This should equal square root of 14. क्या आ गया हमारे पास? lambda square plus 9 plus 6 lambda plus lambda square plus 1 plus 4 lambda plus 4 lambda square. Let me just check this. 2 into 2 lambda, that's 4 lambda. 2 lambda का whole square, that is 4 lambda square. That's fine. On the other side, we got 14 मैंने square root दोनों side से eliminate कर दिया. ठीक है. This was relatively straightforward actually. This question. अच्छा, lambda square plus 4 lambda square, this becomes 6 lambda square, and there's 6 lambda and 4 lambda, that is 10 lambda, 9 and 1, that is 10, and then minus 14, that equals 0. We get 6 lambda square plus 10 lambda minus 4 equals 0. So simplify कर लें, we have 3 lambda square plus 5 lambda minus 2 equals 0. This is the equation that we end up getting here. ठीक है, अब इसको solve कर लें. This is paper 3, so we can actually get away with just writing down the answers, but I would not recommend that you do that. अब इसको अगर factorize कर सकते हैं तो factorize form लिखते हैं या quadratic formula में values input कर लें. वो जो है आप आदत बना लें अपनी, ताकि पेपर 1 में वो मिस्टेक ना हो रही हो. इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? 3 lambda square plus 6 lambda minus का क्या आना चाहिए ना, तो 6 lambda minus 2 equals 0. We get two factors, 3 lambda minus
1 and lambda plus 2. Lambda equals 1/3 or lambda equals -2. आपको दो पोजीशन वेक्टर्स चाहिए थे पॉसिबल. अब ऊपर OP ये जो पोजीशन वेक्टर था उसमें जाके लैम्डा की वैल्यू इनपुट कर दें. एक दफा 1/3 इनपुट कर दें, एक दफा -2 इनपुट कर दें. आई वांट टू राइट दैट हियर. OP पोजीशन वेक्टर क्या था ऊपर? OP वाज minus lambda, 3 plus lambda and 1 plus 2 lambda. ठीक है. अब 1/3 इनपुट करते हैं एक दफा, हमें क्या मिलता है? -1/3, 3 minus 3 plus 1/3 and 1 plus 2 into 1/3. That's going to give us something. ये एक possible position vector हो गया. It's going to be -1/3, 10/3 and 5/3. Yeah, 5/3. That's our first position vector. और फिर इसी तरह दूसरा पोजीशन वेक्टर देख लें. वो आपके पास क्या आता है? OP, इसमें 2 इनपुट कर दें, we get -2, 3 plus 2, 1 plus 2 times, अच्छा sorry -2 था, again another careless mistake. यहाँ पे -2 थी लैम्डा की वैल्यू, -2, 3 -2, 1 plus 2 into -2. Evaluate this and see what you get. You get 2, 1 and -3. That's the other possible position vector of P. Okay, that was question number 9. Question number 10. Let's move on to the last one. We've got the equation of a curve. We've got differentiation again. Okay. Equation of a curve, that's y equals square root of tan x. We have to express dy over dx in terms of tan x and verify that dy over dx equals 1 when x equals pi/4. Let's find dy over dx first. Y equals tan x का square root. इसको square root form में लिख लेते हैं, इसको power form में लिख लेते हैं. It's tan x whole raised to power 1/2. Let's apply the power rule now. Power आके multiply होगी 1/2. Tan x as it is, इसकी power में से 1 minus कर दिया, 1/2 minus 1, that is -1/2. tan x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया, जो पावर के अंदर वाला पार्ट है. tan x का डेरिवेटिव होता है secant square x. That's what we've got here multiplied. ठीक है. Okay. Now उसने कहा है express this in terms of tan x. secant square नहीं आना चाहिए, तो अब secant square को कन्वर्ट कर देंगे. हमारे पास एक तो आ गया tan x का स्क्वायर रूट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan x whole raised to power 1/2. Secant square, if you know your trigonometry, 1 plus tan square theta is identical to secant square theta. तो secant square x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 1 plus tan square x. This is what we have. ठीक है, this is dy by dx. उसने फिर क्या कहा है? You have to verify. जी, फॉर्मुलेशन में दिया होता है बिल्कुल. उसने कहा है x की वैल्यू जब pi/4 है तो आपने प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि dy by dx 1 आता है. अब इनपुट कर दें इसके अंदर. अब क्योंकि आपको वेरीफाई करना है, ये आपको वर्किंग शो करनी है स्टेप बाय स्टेप. ठीक है. अगर आप सिर्फ लिखेंगे कि x की वैल्यू मैंने pi/4 इनपुट की, मेरे पास dy by dx 1 आ गया, ये तो उसने बताया हुआ यहाँ पे x की वैल्यू ये है तो dy by dx 1 है, राइट? तो यू वोंट गेट द मार्क फॉर दैट. अब 1 मार्क होगा इसका, वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप सिर्फ ये लिख दोगे. तो आपने वर्किंग शो करनी है. आंसर इसने ऑलरेडी बताया हुआ आपको. तो आप क्या करोगे? विल से लेट्स इनपुट x equals pi/4. आपने इनपुट करना है इसके अंदर dy over dx, that is 1 plus tan. ये देखें स्क्वायर वाली फॉर्म में कैसे लिखना होता है. हम लिखते हैं tan pi/4 और फिर उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into tan pi/4 whole raised to power 1/2. अब tan pi/4 1 होता है, so it becomes 1 plus 1 का square divided by 2 into 1 whole raised to power 1/2, and that turns out to be 1. And that will get you marks for this part. ठीक है, ये आपने 1 प्रूव कर दिया. अच्छा, now the next part says
the value of dy over dx is also 1 at another point on the curve where x equals a as shown in the diagram. x equals a, तो ये वाला point है, इसके ऊपर भी x की value आपकी इसके ऊपर भी dy over dx की value आपकी 1 है. Show that this thing is true where t represents tan a. अच्छा, उसने क्या बताया आपको? dy over dx की क्या value है? 1 है इस point के ऊपर, a के ऊपर. जब x की value a है तो dy over dx क्या है? 1 है. Now we have the expression for dy over dx. We put that here. dy over dx क्या था? dy over dx was 1 plus tan square x over 2 tan x whole raised to power 1 over 2. ठीक है? This is what we had. Okay. When x equals a, dy over dx equals 1. तो आप क्या करें यहाँ पे? You put x equals a and dy over dx equal to 1. ये input कर दें. What do we get? We get 1 equals 1 plus tan square a over 2 tan a whole raised to power 1 over 2. Now let's simplify this. इसको जाके multiply कर दें left side के ऊपर, you get 2 tan a whole raised to power 1 over 2 equals 1 plus tan a का whole square. उसने ये substitution की हुई है, आप वो use कर लें if you want. उसने क्या किया हुआ है? tan a की जगह पे t रखा हुआ है, right? तो आप उसको replace कर दें. You have 2t raised to power 1 over 2. On the other side, you got 1 plus t square. अब क्या करें? दोनों sides को square कर दें to get rid of this power 1 over 2. When you square both sides, तो क्या होगा? आपके पास आ जाएगा 4t on the left side. On the right side, you got 1 plus 2t square plus t raised to power 4. And now, when you bring everything to one side, it becomes t raised to power 4 plus 2t square minus 4t plus 1 equals 0. So we've got a quartic equation here. T raised to power 4 plus 2t square minus 4t plus 1 equals 0. अब उसने क्या कहा है हमें? उसने कहा है ये शो करने, और ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, ये तो क्वार्टिक नहीं है. हमारे पास क्वार्टिक इक्वेशन आ रही है. So what do we do with this? How do you factorize this? इसको factorize करने का क्या तरीका आएगा? Let me change my earphones. Yeah, so that's one way to do it. You can start trying. Maybe that help. Any other way? और क्या कर सकते हैं? How do we convert this to this cubic form? देखिए, quartic equation हमें solve करना नहीं आती. We don't have a method for that. लेकिन हमें अगर कोई factor पता चल जाए तो हम उसको solve करने की कोशिश कर सकते हैं. Do we know a solution for this equation already? जब dy over dx की value 1 है, dy over dx की value 1 है, तो एक solution हमें पता है क्या? पहले हमने पिछले part में ये तो proof किया. उसने क्या करवाया हमसे? Verify that dy over dx equals 1 when x equals pi over 4. जब x की value pi over 4 है तो dy over dx 1 है. अच्छा, अब x तो हमारे पास कहीं भी नहीं है इस इक्वेशन के अंदर, हमारे पास तो tan की फॉर्म के अंदर है. तो जब x की वैल्यू pi over 4 है इस पॉइंट के ऊपर, तो tan pi over 4 क्या आता है? उसका tan क्या आता है? Tan pi over 4 is basically 1. Okay, तो आप देखें, आपके पास ये t जो है वो tan रिप्रेजेंट कर रहा है. ये जो t है यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर वो tan रिप्रेजेंट कर रहा है. तो tan की वैल्यू 1, बेसिकली t equals 1 जो है, this is a root of this equation. ये इसका एक रूट आपको पता है from the previous part. Okay, let me repeat. X equals pi over 4 आपका एक रूट था.
x equals 𝗫/4 जब होगा तो tan of आपको, क्योंकि यहाँ पे tan के टर्म्स में इक्वेशन है आपके पास, तो tan of 𝗫/4 क्या आता है? That is 1. So basically 1 is a root of this equation. If 1 is a root, that means t minus 1 जो है, that is a factor. Right? अगर t equals 1 एक root है तो t minus 1 इसका एक factor होना चाहिए. तो आप क्या कर सकते हो? आप division से इसको reduce कर सकते हो to something cubic. Division अब आप किसी भी तरह कर सकते हैं. You can do long division, you can do synthetic division, whatever you're comfortable with. ये linear है, तो synthetic is going to be pretty quick. 1, 0, 2, minus 4, 1. 1 आपका root है, 1 यहाँ पे input कर देते हैं. And let's now do the division. 1 as it is नीचे आ जाएगा. 1 into 1 is 1. 0 plus 1 आपको 1 मिल गया. Then 1 into 1 again, that gives you 1. 2 plus 1 gives you 3. 1 into 3 gives you 3. Minus 4 plus 3 gives you minus 1. 1 into minus 1 gives you minus 1. ये आपके पास add होके 0 हो गए. 0 is the remainder, which was expected, क्योंकि ये आपका एक factor है. आपके coefficients क्या आ गए? ये आपका quotient आ गया. This is t raised to power 3 plus t square plus 3t minus 1. ये आपका quotient है. दूसरा फैक्टर आपके पास t minus 1 था. ये आपके पास फैक्टराइजेशन होगी उसकी. ठीक है, आप इसको इस तरह कर सकते हो, लॉन्ग डिविजन से कर सकते हो. That's your choice. Both are okay. If you don't know this method, just do long division. That should work as well. Okay. ये आपकी फैक्टराइजेशन होगी. Now either this thing on the left equals 0 or t minus 1 equals 0. t minus 1 equals 0 तो हमारे पास पहले से था. हमारे पास ये एक और इक्वेशन आ गई, t cube plus t square plus 3t minus 1 equals 0. And that's what we had to prove. t cube plus t square plus 3t minus 1 equals 0. ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया. Okay. Yeah, so finally we are at the last part now. Use the iterative formula to determine alpha correct to 2 decimal places, giving the result of, to calculate it's not alpha, it's a, to determine a correct to 2 decimal places, giving the result of each iteration to 4 decimal places. Okay. अब ये आप पूरा का पूरा फॉर्मूला कैलकुलेटर में डालोगे इस तरह से. Be careful about the brackets. लेकिन which value do we start from? a की वैल्यू आप ग्राफ पे देखें. What does it look like? किसके आसपास है? 𝗫/4 ये वैल्यू है. ये उसके तकरीबन हाफ से थोड़ी सी कम है. राइट, तो आप हाफ से स्टार्ट कर लो. 𝗫/4 का हाफ क्या होएगा? 𝗫/8. That could be a good starting point. राइट, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो. 𝗫/8 से स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो हम इससे स्टार्ट कर लेते हैं. वैसे the first iteration, that's a1 हम कह देते हैं, that is 𝗫/8. आपने क्या करना है? आपने कैलकुलेटर के अंदर 𝗫/8 इनपुट करना है. फिर आपने आंसर का बटन प्रेस कर देना है. और फिर आपने क्या करना है? आपने ये फॉर्मूला पूरा इनपुट करना है. किस तरह से? tan इनवर्स. कीप इन माइंड कि ये रेडियंस में होएगा. ठीक है, डिग्रीज में नहीं. कैलकुलेटर आपको रेडियंस में होना चाहिए. tan इनवर्स ऑफ 1/3 into 1 minus tan of answer का whole square minus tan of answer का whole cube. ये आप जाके कैलकुलेटर में इनपुट करोगे पूरा इस तरह से. ठीक है, and that's going to give you the values 1 by 1. ठीक है, अब आपने ख्याल रखना है आंसर फाइनल 2 डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए. आइटरेशंस 4 डेसिमल प्लेस तक होनी चाहिए. ओके, नाउ लेट्स डू दैट. अच्छा, एक वैल्यू आप फर्स्ट वैल्यू दिखा सकते हो फॉर्मूला में इनपुट करके. a2 कैसे आएगी? tan इनवर्स ऑफ 1/3 into 1 minus tan of 𝗫/8 whole squared minus tan
𝗨/8 whole cube and I'm missing a bracket there. 1/3 सबके साथ multiply हो रहा है. So we got 1 here and we have another bracket here. ठीक है, ये आप एक दफा दिखा दें, A2 निकाल लें और फिर आपके पास सारे. A1 कैसे आया फज़ैन? This is, देखिए आपने ग्राफ पे देखा ना, A approximately क्या लग रहा है? This is 𝗨/4. A जो है उसके हाफ से थोड़ा सा पहले है, तो आप हाफ ले लो 𝗨/4 का, राइट? तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है. ठीक है, अच्छा A2 आप निकालें कैलकुलेटर से. जस्ट इनपुट दैट ऑन द कैलकुलेटर. एकदम राइट साइड पे लिखा था, ये आपने कैलकुलेटर पे जाके डाल देना. ठीक है, इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, तो आपने ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है बहुत ज्यादा कि ब्रैकेट्स आप सही यूज कर रहे हो. ओके, सो लेट्स ट्राई दिस. कैलकुलेटर मोड रेडियंस में होना चाहिए. ऑलराइट, tan inverse of 1/3 into 1 minus tan of answer divided by answer में डाल दें. Okay, tan inverse of 1/3 into 1 minus tan of answer. आंसर का स्क्वायर नहीं करना, tan आंसर का स्क्वायर करना है. ठीक है, सो स्क्वायर करते हुए भी आपने ध्यान रखना है आंसर का स्क्वायर ना कर दें गलती से. देन माइनस tan आंसर और उस पूरे tan का क्यूब क्लोज द ब्रैकेट. 1/3 वाला ब्रैकेट क्लोज हुआ, देन क्लोज द आउटर ब्रैकेट, then evaluate this. Actually, the first value that I'm getting is 0.2473 to 4 decimal places. ठीक है, can somebody confirm this as well? ये आ रहा है A3. I'm going to put press the equal button again. That is 0.2976. A4 0.2844, and then again A5, that is 0.2883. ख्याल रखना है लास्ट डेसिमल राउंड ऑफ करके लगना है. इस पे एक मार्क ऐसी फजूल में कट जाता है, वरना लास्ट डेसिमल प्लेस जो 4 डेसिमल होगा उसको राउंड ऑफ करके लगना है प्रॉपर. अब देखिए स्टेबल होना शुरू हो गया थोड़ा सा. लेट्स डू अ कपल मोर. A6, that's 0.2872. तो इस पॉइंट पे आप जाके देख लें 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये दो आपके पास कंसेक्यूटिव 0.29 पर राउंड ऑफ हो रहे हैं. लेट्स जस्ट डू वन मोर फॉर कंफर्मेशन. वी हैव 0.2875. ठीक है, तो इट्स रीजनेबली स्टेबल नाउ. ये तीनों राउंड ऑफ हो रहे हैं किसके ऊपर? 0.29 के ऊपर. जब 3 कंसेक्यूटिव सेम नंबर पे राउंड ऑफ हो जाए 2 डेसिमल प्लेस तक, you can just stop at that point and now you can say A equals 0.29 to 2 decimal places. This is your final result. ये आप लिखते हैं वहां पे. Okay. Yes, so it's so देखें ये पहला वाला 0.28 पे हो रहा था, उसके बाद फिर 0.29 पे हो रहे हैं. 2 दफा कंसेक्यूटिव आपके पास आ जाए तो that's actually enough, लेकिन 3 दफा कर लिया करें just to be sure. Okay. No, Hashim, 0.2874 is not the final answer. Final answer has to be to 2 decimal places. So final answer आपका होगा 0.29. Okay. That has to be 2 decimal places. All right, so this is what we get, and that's our final result. And that completes our paper. This was November 2021, paper 3, variant 2. So we're done with this. Let's have a look at the paper again. For question number 1 आसान था, 2 आसान था, 3rd was okay, slightly tricky क्योंकि वो notation use हो रही थी कुछ. 4th was straightforward.
5 was slightly tricky. इसका second part argument find करना, उसमें कुछ आपको trigonometry use करनी पड़ रही थी. 6 was fine, yeah, आसान था. 7 was also relatively easier. 8 was again a bit tricky. इसका first part was tricky था, second part आसान था. 9 was 9 was okay-ish. It was not too difficult. इसका second part भी आसान था, pretty standard. Vectors वाला question भी आसान था इसमें. Last question थोड़ा सा tricky था फिर इसमें. At least इसका second part भी इसका काफी tricky था. I found this part to be the trickiest in the whole paper. उसमें figure out करना कि आपका factor कौन सा है t-1. उसके अलावा the rest was, अगर आप P3 के perspective से देखें, it was like relatively average difficulty.